Okay. Good evening, ladies and gentlemen, girls and boys. Welcome to Metaninza launch series. Today we're gonna proceed the semifinals of the lower bracket teams. First match being between team Phoenix Esports versus C3 Meraki. And in the casters deck, I'm your caster Shinji. Along with me, I have my friend Jeff here. So Jeff, how you doing, my buddy? I'm doing absolutely great, Shinji. What about you? How are you doing now? Yeah, I'm absolutely fine here. This is this is gonna be really amazing. The semifinals of lower bracket teams. We're gonna see who will be moving to the finals now. And yeah, let me tell you guys, download the Meta Ninja app from the Play Store for more exciting tournaments. And don't forget to like and subscribe. And with this, we will be heading towards the draft. So, Shinji, what do you think about this matchup here between the Phoenix Esports versus Team C3 Mirakis here, the lower bracket semifinals coming in? Aren't you excited for it? Yeah. I'm really excited to see like which team is gonna rock the match today. I mean, who's gonna move to the finals? Both the teams are really good, and I saw Team Phoenix Esports especially. They played really very well. They have the Exactly, skill to exactly. stop them, and their EXP laner plays that Phobius really very well. I saw him playing Phobius, and he was like he just chalked out his counter heroes like CC and all with the Phobius. Damn, it was really insane. But looking into the draft, C3 Miraki going for the first ban of Iritel and Phoenix Esports with 1-1. What do you think about it, Jeff? I mean, like they are focusing on the goal lane here instead of going for the Lapu. In my opinion, Lapu and Yuzong, this current patch alongside Uranus is a menace in this patch. With Senji alongside, I can see C3 Meraki, C3 Meraki coming to lower bracket. But this is the first time I'll be seeing Phoenix Esports here, so I'm quite excited to see this matchup here. And with that, we'll be seeing the Burning, the Blazing Guy, X-Bark being banned off. The true damage right now is too heavy for the Xbox here. With that, we'll be seeing the Lancelot coming up. What do you think about the ban, Sinji? Xborg is really good if you have any, utility hero against you, just like Bashia, Fredrin, and many more tanky heroes in jungle, even in the EXP lane. But talking about the Lancelot, after the recent patch notes, Lancelot skill Puncher, its CD has been reduced, so it's really going very well. And in the recent matches of MSC, we got to see Carl TZ playing that Lancelot. It was really amazing, and I think that Phoenix Esports don't want it in this Meta Ninja. That's why they just banned it. But Gatot Kacha and Granger getting banned too. What do you think about that? The Gato being banned off for the AoE as well as for the Lancelot, the passive CD reduction coming in, like he can stack up the stack really early on with the 4 stack coming in. The damage will be really high. And with that, we'll be seeing a follow up coming in for the Grandeur here. The Grandeur, that early to mid game damage, and not even the mid game. If he gets the snowball, the late game is going to be the harassing part here. And with that, we'll be seeing an instant lock for C3 Miraki here. Last night, I saw IGN banning YSS, the Yi Shin. So I guess it was a comfort ban coming in, a respect ban for IGN there. But we'll be seeing the follow up coming in for the Arlot and Farsa here. The Farsa, the AoE queen, as well as for the. Oh, Arlot is kind of. I won't say it's a perfect pick to be going for the first here, as Lapu is open, Uranus is open. It can be a really good thing. But what do you think about it, Shinji? Yeah, Arlot is kind of underrated hero, but he is really good in EXP lane because if you have heroes like Akai or else Minotaur and any CC heroes onto you, then yeah, Arlot can dash just like Lancelot's Puncher here with his second skill. But yeah, the answer from this side of C3 Miraki, it's gonna be Phobius and Bashia. Like Bashia for the roam and Phobius for the EXP. Nice. Exactly, the anti-heal monster being picked off first time for the tournament here in the lower bracket as well as for the upper bracket, the double bracket coming in. As we can see the follow-up of the Phobius coming in, but for the counterpart, we'll be seeing the true damage hyper coming in, the alpha.
The guy who can melt down tanks in no time. That's a good pick. That's a good counter pick coming in. And with the bans coming in, the Zatian being banned off, the global vision will be taken out here. What do you think about the three picks already coming in from both the teams, Shinji? Right now, C3 Miraki going with that EXP, Roam, and Hyper pick, and from the side of Team Phoenix, it's gonna be Arlot Roam or else Arlot EXP. But yeah, Alpha and Farsa, it's confirmed they're gonna be like mid and Hyper. But looking in the draft, like both the teams going with the first three picks, I would say like C3 Miraki is still in the upper hand right now because YSS is really good in farming. You can farm Mhm. very fast, as compared to Alpha. It takes time for Alpha, but if Alpha knows when to engage, then he will be able to melt down those two heroes, Phobius and Bashia as well. And if like Arlot can get that YSS, then yeah, it's just easy for Alpha to take down the whole team from the side of team C3 Miraki. Yes, that's true. That's true. But with the bans coming in, the Moscow Phoenix Esports completing their bans with the Moscow, the guy you can split push and join the team fight in no time as well. That's the annoying part about Moscow. He will be in the other side of the map and he will be teleporting in no time for the team fight there. But for the C3 Miraki, the counter picks, the counter bans coming in as Gatot Kacha was banned. Alongside that, the follow up coming in for the Hylos. They don't want the glorious path there as well as for the Matilda. The Matilda Airlines will not be there this time, but the picks will be going for the Phoenix Esports. What do you think? Is it the Arlot Rome or are Phoenix Esports planning or cooking something up there? Let's see, it might be Arlotrom or Arlot EXP. I'm not sure, but yeah, if they combine with Arlot EXP and Minorom, it will be really insane because the unlimited dash she can get because of that ult by Minotaur. It will be really amazing if you got to see that. But yeah, had it getting picked by the side of Phoenix Esports, what do you think about it? Mhm. Had it against a Phobius, ooh, that's kind of a questionable pick there, I would say. Had it against a Phobius is never a good thing, especially with the Bakshi as well. If had it manages to use his second skill, unlimited dashes wisely, he can make up for the pick here. But as the Phobius is there, it won't be easy for Hadit to be dashing around freely in a team fight. That's kind of a bad pick, I would say. But let's see what C3 Miraki are cooking up here with the Zushin coming in, as well as for the Roger, the Wishing Lantern. She will be taking out the front lines out in no time, as well as for the Roger, man. The Roger in this man. Wait, the Roger MM. I just realized it's the Roger MM coming in for the C3 Miraki here. Shinji, what do you think? A new thing is cooking up for C3 Miraki here. Yeah, I mean, Roger, he got buffed in the recent patch, and he got some, CD reduction too, and some damage has been increased. And yeah, if you say like the Roger going for the Gulen, it will be nice against Harriet because to take down Harriet, most of the MMs get chalked against Harriet. But if you say a wolf, I mean, a human with a wolf form, going against that Harriet, you know, the result may be something different because Roger has the damage onto him. The human form deals more Mhm. damage in the poor 70% or 100% HP, and the wolf form it damage a lot more damage when the hero the opponent side hero is 30% or 20% like that. So yeah, Roger might be good against that Harriet, but looking That's on true. today, That's true. what do you think about that? And with the drafts being completed, the thing you stated out for Roger, that's actually true. But I would say, in my terms, we can see C3 Meraki winning the draft. But at the same time, the Phoenix Esports, they have gone for the Tigreal there, and they can go for a really perfect combo for the Farsa. The Alpha, and none other than the Arlord and Tigreal coming in. The CCs coming in for the Phoenix Esports there. It is looking really good as they will be able to win the team fights. But as well as for that, C3 Miraki, they got that really tanky. They got the anti heal monster. They got the frontliners. They got the sandbags. They got the backline hunters, especially for the Zushin there. She can disrupt the enemies pretty easily and not let them get up front here. So, Shinji, what do you think about the draft? Who is going to win this match here? Right now, if you say about the team fights and all, Team Phoenix Sports have upper hand because look at them. They got that Farsa for
AoE zonings and all, and yeah, even the Tigreal and Arlot combo, it's really good. Their ultimates can get you really very well. Arlot with that final slash and Tigreal with that implosion, it will be really amazing. And Alpha and Harriet, they can just vanish you in seconds. So Mhm. I would go with their draft, but it's more of 5v5. We can predict who's gonna win because miracle might happen anytime. Yep, exactly. But before that, guys, make sure to download the Metaninja app from your Play Store and don't forget to like and subscribe as we'll be heading into the land of Zon with the battle coming in between C3 Mirakis on the blue side, the left side, and the Team Phoenix on the red right side. Yeah, my bad on that. I choked a little. But anyways, as the fight goes on, I can already see the team fights, the mid lane harassment coming in. That's something I was predicting at the same time, but since Tiger was not there, I was expecting. Oh, Ooh, that okay, survival, Roger. that survival coming in on Roger. Oh, Shinji, that was amazing. I mean, like Roger went in, but the flicker he used it to get out there. Yeah, I just thought for a second like Harris is gonna, be dead there. The first blood will be from the side of Team C3 Miraki, but Harris just, used the second skill. He managed to get some shield onto him, and he was, safe there. But Roger, he was about to die with the, flicker. He managed to escape, but look at there in the top lane, Phobius being harassed by these three guys, Alpha, Arlod, and Tigreal. Okay, in the mid lane as well. YSS, damn. Ooh, So it's like you'll take our EXP laner, we'll take your mid laner too. exactly, exactly. That trade coming in, I mean, like it was a three-man gang on the top lane as for Phoenix Esports coming in as the follow-up, the reply coming in from C3 Mirakis on the mid lane side as well, and the turtle being taken out the red tree. That was not the red tree battle. The YSS got it easily as Arlord tried to harass a little. But on the bot lane, I'm still amazed on how Roger survived for the little HP as Phoenix Esports had it. Watashi, he could have taken it down. So that was quite amazing, I would say, in my opinion. It was, because if you see like in the top lane, like Phobius, it's really hard to melt him out. But in the early game, they just gank there in the top lane because they know in the goal lane they have Roger. It's hard to take him down. But Phobius, he don't have that much of movement speed, and they can get him down there. But look at that, Phobius getting that kill onto that Tigreal. Okay, Super M will be taken down as well. They're being punished for taking down the Ooh. Tigreal, and Phobius will be taken down as well. That's a good reply coming in from Team Phoenix. Yes, they take out two members with no losses there. That's quite a good trade. Not even a quite a good trade. They won the trades there. It wasn't even a trade. It was a dominance coming in. As our lot, man, he already got that level 6 in his hands. As I am expensive. I mean, like in 3 minutes, getting the level 7 is quite expected for the time. YSS there. Okay, so the battle coming in as while the Spirit of Alpha not connecting on anyone, but the Tiger got that set there. That was a really good set coming in, but Team C3 Miraki, they got the reply that they went in, they took out two of their members there, so that was quite a good reply coming in from C3 Miraki's here. As we can see at the top lane side, that was not going in that easily, man. But we can see the replay coming in as there was an instant replay. The AOE coming in from the faster here, and she took it down pretty easily as Hadit went in for the reply. I mean, like for the follow up. They took out two of the members, but it's kind of what it is, at the bot lane, we can see the fight going in. The airstrikes coming in from Alpha. I mean, like Farsa coming in as well as it secures the turtle there, and they go in as the killing spree coming in for Roger here, and the team Phoenix Esports has to back off as Roger goes for the chase here, but Farsa will be using the transformation going back as Arlot goes for the damage here as he uses his spears, the second skill coming in, but killing spree coming in from the YSS here. The Yushin Shin secures the killing spree as he goes to the level 8, almost the level 9 mark there, and the bot lane being harassed. It can be taken down now. But the team fights, man, the team fights coming in from C3 Meraki, those are the impressive ones now, as they are replying really badly for the Team Phoenix. The Team Phoenix, they did get a really good set there, but they weren't able to do anything as the airstrikes coming in. Once again, the Tiger using his AoE coming in, and they went in. The kills coming in, they had it secures the kill on Bakshia there. That's a 035 KDA for our Bakshia, and Alpha goes in for the pushing.
Okay, like seeing them, they are really, taking a good kind of strategy. Like the roamer, if you slay the roamer, you won't get that amount of gold. But like if you get kills cause of the roamer for other guys, like if you sacrifice the roamer for mage or exp or gold laner, it might be upper hand for you because you get more gold. But here, double kill onto the twices. Okay, it might be a triple kill. Why is this going for triple kill? And it's gonna be a maniac. Can he take a savage? But no, he will just focus on pushing the top lane right now because he just managed to escape with the slaver amount of HP there. Exactly. I mean, like the team fights, the amazing fights coming in and the replies coming in. The Phoenix Esports, they managed to get a good set, but in the reply back, man, the team C3 Meraki, they managed to do a lot of things. I guess in my opinion here, Team Phoenix, they didn't get enough damages coming in, or it was just the snowball not being happening on the side. As Alpha in the early game, if he gets the snowball, that's the only part where he'll be able to do something there. And in the instant replay, we can see the maniac coming in for YSS. That was amazing, and they just went in for the top lane. He secured the top lane turret there, and the mid lane turret being taken down as well. And the bot lane, we can see a gang coming in for Herod there. Okay, Carrot being harassed by this duo, Bashia and Phobias. Both of them are like, Bashia is an anti-heal guy, anti-heal monster, and yeah, Phobias, he won't let Harriet dash properly. Both are just, harassing Harriet as much as they can. And in the mid lane also, you saw at that moment, Roger and Phobias, they just vanished out that Harriet. Yes, exactly. That was amazing fun coming in, and the damage coming in from YSS, man. That's a really good damage for, especially for the Alpha. The Alpha taking that much damage from a YSS. That's good. Okay, look at there. I guess Bashia will be taken down there. But look at that. After taking down the Bashia, implosion coming in, but mega kill for that Roger on killing that Tigreal, and yeah, Phobius, I guess he's trapped down there. He have to escape, really be able to escape, but no, he will be taken down there by the Harriet, and YS is focusing on the push, but yeah, Arnold is not letting him push, and YS is, I guess he's gonna get caught. YS is trying his best to The escape, shutdown but coming he in. will be shut down there by that Farsa. That's a really good. I mean, like the comeback. I mean, like the shutdown coming in from YSS. That's a good thing, especially for the Zenny being taken out as well. We can see Team Phoenix Esports. They are making a comeback. They are making the use of their frontliners, the AOE coming in from the Team Phoenix. That's a good thing now. They are making use of every single bit of the power they have as Alpha. He is still 2 levels behind YSS, but that's expected from YSS. Getting the level ahead of your enemy. That's the priority coming in from YSS all the time. Yeah, because the YSS is Ashishian, and the Ashishian heroes are like they gonna farm up very fast. And if you talk about YSS, he is a really good, Ashishian in the list, double S tier Ashishian. He got that, farming speed onto him. Yep, exactly. Alpha, like Alpha is a bit slow there because he is a utility kind of hero. But like if you say about the sustain, then yeah, Alpha is there, he can sustain very well. But look at there might be a fight, and yeah, both the teams trying to and yeah, look at that, unstoppable from that Roger, and yeah, Tiger will be taken down as well, and Harriet will be taken down there. Only one casualties from the side of teams C3 Meraki, and yeah, 4 people slain from the side of Team Phoenix Mhm. Esports. Phoenix Esports, that was a good team fight engagement coming in, but C3 Miraki, they are playing for the reply back for the enemy's set there. They are just waiting for the enemy to get a set, and they will be replying towards it. As we can see the Roger farming peacefully on the top lane side, and the Lord coming in on the hands of Team C3 Miraki here. You know You the know, main yeah, Yeah, the main like fact about this is that C3 Meraki got here. They have the Baksha, they have the Povius. They won't be dying no matter what, especially for the anti-heal coming in, They won't let the enemy regen, and they are going to be the one regening all the time. okay, there. Look at that, Ooh, shut Arlo. down. Nice gameplay. Arlo just chased him so well, and he was just taken down that Damian there, and yeah, Farsa will be taken down by Bashia there, and yeah, Arlo will be taken down as well, and
Carrot will be taken down there. Double kill from that YSS, and yeah, Basha will be taken down there finally from that Alpha, but triple kill again by YSS there. Only one man surviving. Tigrel Exactly. banded. Those are the fun parts, those are the fun parts, especially for the team fights, man. I'm telling you that Team C3 Meraki, they are not going to let anything slide, especially with the anti-heal and that. But Team Phoenix Esports, they can make a comeback if they play it safe and play inside the turret, just farm peacefully for now and wait for a complete set here. And we can see our Zushin making a slight mistake and will be getting punished for it. At the top lane fight, at the replay side, you can see that how Baksha he reverted his skills there and went back for the securing kill for Farsa there. That was a really brave and good move coming in from Baksha, and the triple kill that will be coming in for YSS as well. So YSS is farming peacefully, and we can see the level gap here. I mean, like he's already at the 15 level. Level 15, the max level already for the YSS as Tigreal goes in. Okay, there we got to see an implosion there, but also will be taken down there. YSS is coming from the backside and he just took the double kill there, and a triple kill from that YSS. He might get one more maniac there, and yeah, double maniac by YSS for this match. And yeah, this is the end, guys. Because it's Team C3 Miraki, they are just, using this strategy. Let our roamer go and die first, and we'll go from the backside and we'll get Exactly, all of your exactly. team down. That's a amazing part, that I noticed there. That every time their tank dies, YS's follow up out of nowhere, man. That was something I was not expecting at the same time, but they did it really well. GG's to team C3 Meraki here. They did a really good thing, and I guess that Phoenix Esports will be banning YSS. A respect ban will be coming in this time. But anyways, guys, this time we can see that Team C3 Meraki they managed to secure 1 point here. We'll be taking a little break here. We will be back in a short minute. Okay, guys, there is no break here. We'll be jumping right into the next match. So, Jeff, what do you think? Like, Team Phoenix Esports, are they gonna do a comeback, or like the team C3 Mm, Miraki, they gonna do the clean sweep this time? I think that a clean sweep might be coming in, but we can never underestimate a team coming in, especially a team named Phoenix Esports, the Phoenix man. It's always the fun part. It's always the fun part. But anyways, let's see what the counter picks are going to be. Will Phoenix Esports learn from their mistakes, or is it going to be a clean sweep? Yeah, like we can never, predict or guess out which team is gonna do a clean sweep or who's gonna do a comeback, because both the teams looks really very strong. This might be a draft issue, or else some uncomfortable picks from their side, because people, they are always confident with their comfort picks. So this time, I guess team, you know Phoenix might come with their comfort picks, and they might take this match again, Mm-mm. or Since, second round. But yep. here we are in the drafting phase. Jeff, what do you think? Like, what kind of draft we gonna see right now? Because as you said, YSS is gonna get banned surely from the side of team Phoenix Sports. I mean, like with the double mania coming in, Phoenix Esports they need to give that respect ban to the C3 Miraki's jungler that they need to give out the bans. The YSS, the Baksha, they need to be banned. Yes, I think C3 Miraki has the comfort on Baksha and YSS here, especially with the last match. We already saw how YSS went in only after Baksha dying, as Shinji noticed. I mean, like pointed it out there. But Phoenix Esports, what are they cooking? They are taking the sweet time to go and abandon as the 1-1 again will be banned. Oh, Shinji, do you think it's gonna be the same bans? Saying about the drafts, the bans. One is a really good ban. Yeah, if you ask me, because if you see in the golden, one is really going very well. Even the irrital, both these MMs are shining in the golden, Mm-mm. because only few heroes can counter them. And if you know how to play these two heroes well, if you're like just like one trick kind of heroes, what one trick kind of player with these heroes, then yeah, nobody can counter you, even if you have your counter in your opponent. Because one and irrital, if they get their damage spike, then yeah, they can just finish you off. But C3 Miraki, I guess they want to ban Bashia for Team Phoenix this time. They won't pick this hero, and they won't give Oh, it to look the. at that. As I said, the respect ban on the YSS coming in, man. They be like, bro, wait a minute.
We already banned one on right. Let me ban devices. I don't need any maniac from their side anymore. Exactly. No more maniac farming coming in from the side of Team C3 Miraki Jungler here, and we can see the Lancelot coming in. These two heroes, Lens and YSS, these two are really amazing right now in this Korean meta. Both of these heroes, like, they are really farming very well. They have that farming speed, they have the damage onto them, and yeah, this most amazing specialty on them is they can just come from the back line, finish the back line off and the front line too, and it's really easy to secure Maniac or Savage with these two heroes. They are really amazing. Mhm. Yep, that's true. That's true. And with that, we can see the Bakshia, the anti-heal master, Team C3 Miraki. They won't be going for that now, as Gato will be banning off the AOG, man. The Gato's AOG, once it connects and the follow-ups comes from the team, it's basically like a really easy fight coming in, as it is maximum times I can see that whenever the AOG connects on the 4 or 5 man gang there, team that has the Gato and gets the connect, those team actually wins with the Thorn and the all coming in, and we can see the Uranus being banned off, the Sandbag, the unlimited heal coming, like being banned off this time. What do you think, Shinji, about the bans here as Sicilian follows up? you know Uranus, we don't have to give an introduction for that guy, because if you see him in your opponent, then you surely have to pick carry in your goal lanes to melt that hero, Mhm, because mhm. melting that hero down is really hard work. So if you want to make it easy, you have to pick carry or any burst hero, because Uranus, he can heal very easily, he can sustain very well. He is one man army for heroes like Alucard and all. You can sustain very easily against them. But yeah, looking at the Sicilian pick, what do you think about it? Exactly, I guess Team Phoenix exactly, is gonna exactly. do a late game match. I think that Team Phoenix Esports, they are cooking something for the late game here, but we'll see three Meraki cook. Ah, look at that. The Lapu Lapu coming in, as well as for the Kalia. The Tsunami Slam is going to be annoying, as well as for the Wild Charge. I mean, like, not the Wild Charge. The Alts coming in will be from the I mean, like, for Lapu, that's amazing, As for Lapu in this current patch, he is dealing damage at the same time he's sustaining a lot, especially with the second skill defense enhancement coming in for his. What do you think about the two picks coming in from C3 Miraki here, Shinji? Lapu is really good in the XP lane. A good Uranus can counter a good Lapu Lapu, and a good Lapu Lapu can counter a good Uranus. So Uranus Mm-hmm. is banned there. There is no counter for Lapu right now. They are going for the Lapu, and yeah, he can just you know do that in the XP lane. He can just be a menace for their opponents. But if you ask me about Kalia, she is really good. If you see her in your opponent, you surely have to use that Again, purify onto you. okay, okay, we can see a Padang Rome coming in, as well as for the Terisla coming up, and the follow up from C3 Miraki, the Grandeur. To counter a Grandeur, you have a Irithel open, but I think that they will be banning off the Irithel this time, as the ban phase has already started here, Shinji. That was a smart move, in my opinion. Yeah, absolutely. They just kept the Irrital open to see like if the enemy is gonna pick Irrital or pick Granger. Let's see. And they got the chance, the last pick of the first phase. They picked the Granger. Now they have the chance to ban the Irrital as well as the heroes like Moscow and all. And yeah, we got to see the ban here, just like you said. Exactly, exactly. The Irithel. The prediction Irithel coming in there. I mean, like, you can call me Jeff the Prophet, But anyways, jokes aside, we'll be seeing the picks, not the picks, the bands coming in. C3 Meraki, they still have a one band left off. What is it going to be? Okay, guys, but before anything, I would like to say that if you guys are enjoying until this far, be sure to like and subscribe to the Meta Ninja launch series tournaments here, and don't forget to download the Meta Ninja app from your Play Store, as it provides a lot of tournament information, as well as it's really easy to use and fun to watch over for every single tournaments coming up. And without any further ado, we'll be jumping back in the draft with the X-Borg being banned off from C2 Miraki, as they will be completing the draft with the X-Borg, the True Damage, the Burning Boy coming in as the follow-up coming for the Phoenix Esports. It is going to be a Zushin and the Fredrin. They don't want the tanky lineups. They don't want a tanky jungler, as well as for the Zushin disrupting their front line here, Shinji. Yeah, like Yoshin, she is, really irritating for utility heroes like, what do you say, Bashia, Fredrin.
even if in the EXP lane, if you see Gatot Kacha or Hylos, Yuxin is kind of a, uh, what do you say, a nightmare for the utility ones. And even the Xborg, he can just melt it out. He can just burn you down. The utility ones have to, be careful because of that Xborg. But Fredrin getting banned, I think they like don't want anyone to sustain from the side of Team C3 Miraki because they already have Lapu and Kalia there. But Selena Oh, gets picked, and oh, the Haya and Moscow as well. What do you think about it? After I saw the MPL match where Selena got picked against Onyx, yeah, against Onyx when Aurora picked I mean, like Selena, that was a really aggressive fights coming in from them, and I'm expecting the same fight coming in from our C3 Meraki here. But without further ado, we'll be seeing the Moskov being locked off. It is going to be a split push at the same time. They're joining the team fights in no time situation here, as Hayabusa being picked up as well. The backline will be in danger, but not the follow up, the pick coming in, the Akai, he will be disrupting the front line. No sets will Okay, be given for Phoenix Esports here, Shinji. What do you think about the draft here? okay, like after a long time, I got to see Akai Jungle getting picked, or else it might be Akai Rome. Like, Ooh, Kalia already has been picked. Like, it's definitely gonna be Akai Jungle. So, what do you think? Like, Akai Jungle, is it gonna be like good against the lineup team Phoenix Esports got? Because if you ask me about the draft, Phoenix Esports still have the better draft right now for pickoffs and team fights. in my opinion, I would say Team C3. I'm not being biased or anything, but I'm saying that C3 Meraki, after I mean, like the first match, they absolutely dominated for the team fight and everything here. And I'm looking like, it's looking like that Phoenix Esports is at a little edge there, and they need to pick their comfort. They need to make for the late game here. Shinji, what do you think about this matchup as well? Who do you think is going to win? Is it going to be a clean sweep for C3 Meraki here, or will Team Phoenix make a comeback here? If you look at the draft and if you ask me about the like who's gonna win looking at the draft, then I would go with Phoenix Esports. But if you say about if you ask me after watching the last match, then yeah, I'm literally very confused because C3 Miraki, they performed really very well last match. The YS's gameplay was really amazing, and look at there in the top lane, like goal laner is just dominating the side Oh, of we can team. already see a Lito fight coming in as Alina's Abyssal Traps connect, but that will be a disengage coming in. The Lito going towards the red side, the C3 Meraki will be getting the easy Lito here. And the top lane, Moskov being harassed, that's funny at the early game side as well, especially against the Granja. I mean, like, Granja does dominate in the early game, but aggressive Moskov will sure be a good thing. And the Padang, okay, the vision has been given by Kalia there and Abyssal Traps and the Abyssal Arrow not connecting for this time, and the bot lane, it is a disengage. The Badang Room, the special part about Badang Room is when he gets his Thunderbolt alongside the Oracle here, he becomes a beast. He doesn't want to die at all. He'll be going in, he'll be getting the set, and he will be escaping or rather die. That's the only good thing about Badang, I would say. But at the same time, when you go damage for the Badang, man, it's a abolish, it's a dominance coming in on the EXP side there for the bot lane. Okay, we can see the Granger going in. That might be a first blood coming in, but the flicker coming in. The Akai goes in with the roly poly coming in, and they will be surviving. No, the first blood coming in for the Granger here, but the Moskov will be getting the reverse kill here. The Akai might be in a little bit of trouble here as they go in, and we can see the Akai surviving. Oh, that was a good fight coming in from both the teams here. The 1-2-1 trade, both the MMs dying here. What do you think about it, Shinji? How was the fight at the top lane? It was, really amazing. Akai becoming that Beyblade and coming in like, yo, Moscow, you ain't surviving. I'm coming for you. And after that, he just went out and he's be like, I'm not the one who's gonna kill you. It's gonna be my friend Granger. Okay, we can see the penalty zone coming in already for our Terizla. Wait, I didn't quite get that. Why did Terizla use up that? In my opinion, he should have waited for it and used the first kill instead. But if he's going for any CD reduction emblem, that's a different thing. But during the turtle fight, man, he should have saved his penalty zone for the Badang's combo here. But anyways, we'll be seeing the turtle, and I don't think so. It is a engage coming in as Moskov being harassed once again. But the bot lane, but the red buff fight as well coming in as Kalia goes in a really deep position here, and she will be taking down the punishment coming in. Super M will be taken out, but the bot lane, the reply coming in once again. The Terizla will be taken out. The C3 Miraki, they got a turtle, they got a kill, and I guess the red buff was taken. Oh no, I don't think so.
But we can see the Moskov being taken out. The Moskov and the Grandeur dominates once again. But the Badang coming in for the reply. That will be a flicker. Second skill coming in and the all following up for the finish there. And we can see the Badang securing the kill on Grandeur. The Grandeur will be taken out once again. It is basically like a trade coming in. Whenever Grandeur kills Moskov, the Moskov will be taking out. Not the Moskov or someone will be taking out the Grandeur there. Shinji, that's the funny part. What are your opinions on that? Damn, like I have no words for that Granger. He is just spamming his episode straight, and Moscow be like, "Bro, please leave me," and Granger be like, "I'm gonna take you down today because we gonna do a clean sweep." But let's see what Phoenix Esports gonna do because right now Moscow is getting his revenge onto that Granger there. Exactly. If not Moscow, there will be someone else taking the revenge here, but the abyssal trap being connected towards Moscow. The Moscow man, he is being harassed as Lapu Lapu goes in. Will be getting the kill on Hayabusa there as the first kill comes up. We can see the Akai going in for the roly poly once again. He will be going up. The Kalia Super M will be taking out the contract killer there. As they go in, the team fight will be disengaged, but Aditya, he will be going in, might take out Super M there, but they go in, the Super M will be taken out from Sicilian here. That was a reckless move coming in, but the Zen, he will be taken out by Watashi here as our Terizla. He joined the team fight really late here. But the mid lane fight, we can know that there's a disengage now, but the turtle will be spawning in 20 seconds. How was the team fight in your opinion, Shinji, there? It was really amazing. For a moment I just thought, Phoenix Esports, they gonna get chalked by the side of team C3 Miraki. Yeah, C3 Miraki did well in this fight, Oh, we but can see a fight Moscow, coming let's in for see. Grandeur here. The Grandeur still has the flicker, he will be surviving, but the second skill coming in, contract killer missing the second skill there, but the follow-up coming in, the super team going for the Moskov here, not having the Purify, will be getting punished there as Moskov will be taken out by the Lapu Lapu. Will it be a double kill? No, the super aim will be getting the kill on Moskov. A roamer taking out the roamer and the EXP taking out the there. That's a good fight coming in. Like it feels like team C3 Miraki be like, bro, we ain't going for any third round. We just want to finish this match right here, right now. It's gonna be a clean Exactly. sweep. Team Phoenix, they went for the late game prop there, but the team C3 Okay. Meraki, they didn't want it for that. And we can see the Grandeur being taken out by Aditya. The second skill coming in, the super aim making a reckless move will be taken out. The contract killer will be punishing for that unlimited stun there. As the team C3 Meraki will have to back off. They did got the turtle though, so that's kind of fair there. But we can see our Terisla going really good. Like I just thought for a moment, team, C3 Miraki will get Oh, an upper that's a hand. good set coming in as Nox will be taking out the Lapu Lapu goes in. The flicker will be saving the life of our Terizla here. But the penalty zone coming in and the roly poly coming once again. The second skill being sending back the Zenny there as Super Aim will be going for the follow up. The knockup coming in, but no one will be caught in the all of Kalia there. The Tsunami Slam will be wasted as we can see Aditya trying to use that Phantom skill, but will be forced to back off. The mid lane might be taken out, but since there's no minion, team will be able to save up there. Okay, like I mean, it's the Akai. He is just saving his team from every CC Ooh, team. okay, Trying we to will do. see Granger getting punished once again, but Aditya will be getting the shutdown there. Fun fact about Granger here, he is making a lot of reckless move. Like he's playing aggressive, that's a good part. That's how a Granger should be played, but he needs to make his skill being used wisely as well. But we can see the roly poly will be disengaging, will be getting the blue buff. Shinji, what do you think about the Akai here? Like Akai saving his team all the time. What were you saying about it? Akai, like most of the times we got to see Team Phoenix Esports, they are doing their best to give the CC and all, but you got to see in the replay, Akai just came out of nowhere and with his roly poly, he just, saved his team from the CCs Ooh, the and all, flicker and yeah, coming with the in. stable amount of HP. Oh, we can see like Hayabusa got that twitched there, but we can see Aditya might take out Super Aim. No Super Aim surviving as Terizla goes in. No flicker will not be able to use the penalty zone flicker combo there as Contract Killer drops really low. Might be taken out by Grandeur here, but the Moskov dealing out the critical damage now. Like the damage of Moskov is always the critical part there as they go in. The Contract Killer will be surviving with the Moskov man. Instead of the Moskov, Contract Killer should have died, but Moskov sacrificed his life for the Roma to survive. That's kind of odd, because we usually see the Roamer saving up the here, but this time the saved a Roamer here. That's why I'm just, thinking about it, and, it's really funny, because like, Balang be like, bro, I can't save you, I have to save myself too. I'm running, bro, bye. Oh, exactly. That's what happened there. But we can see the
fight. I don't know why Terisla engaged there. That was a reckless move, but the roly poly, the rollout coming in from Akai once again will be getting the Terisla here, but the penalty zone coming in will make him sustain for a little longer. Might survive, no, but the slam coming in from Kane. No way, he's sustaining. Damn. Sustain coming in from the Terisla here, he will be surviving. Ooh, that's a good thing Whoa. coming in. Amount of sustain, the amount of LM coming in, that's a good part. But the mid lane second tier will be taken out in exchange. That's the fight, that's the freaking really good fight coming Okay. in. Jeff, I guess like I can smell some, I can smell that Team Phoenix is cooking this match so that they can like, you know, move on to the, round number three. Because Exactly, look at exactly. them, they are just doing a comeback. Okay, penalty zone there. Oh, the penalty zone being used up really early on, but Lapu will be using his all to run out of the position, but the Moscow will be taking out, man. The Lapu, this is the fun fact about Lapu, man. Whenever it's a 1v2 situation, he will either take two of you down or he will take one down alongside him being taken down. But the follow up coming in from the C3 Meraki here as Roly Poly being taken once again. The Aka is all coming up as the fight are being engaged there, but the Hayabusa being caught off really bad there as not having the penalty zone will be a risky move as Lapu Lapu uses all the goals in the second skill will be giving him the defensive part there, but the third wings coming in as well. He will be getting this extra spell vamp there as the double kill coming in. The contract killer will be taken out from Zenny here. This is looking good. What were you saying, Shinji? I was expecting a comeback as well. I was expecting for a game three, but Okay, but C3 Miraki, they don't want that to be happening here. C3 Miraki, man, they are going for the full aggressive part here. C3 Miraki be like, wait, casters, we won't, we won't let them do a comeback. It's gonna be a clean sweep. Don't worry. And Exactly, they just especially Meraki. If you are watching the stream, man, you guys need to chill out. Give Phoenix Esports a little space to breathe air. You guys are not giving them even a single chance to fight back. You guys are just dominating once in for all. And the comeback, like a slight glimpse of comeback coming in from Team Phoenix Esports. I was expecting one as well, but the way you guys are playing, man, the aggressive part, I don't know what to say about it. As Aditya gets caught in the abyssal trap, the Lapu Lapu okay. is speaker and the first kill, and Aditya will be taking out the Sicilian man, and the Roly Poly coming in will be catching the Terisla here, but the Queen Swing will be saving as Tsunami Slam was not available. It was in the CD, but the penalty zone being used up on the air here as the abyssal traps connect. The Piercer will be securing the kill for our Granger here. And did you notice there how Akai was taking the turret damage for his team? That was amazing. That was quite cute, in my opinion. But anyways, we can see a one-on-one fight coming in from Moskov and Lapu Lapu. Yes, Lapu Lapu goes in, man. Oh, the Moskov surviving. Like there I got to see like Terry is like using his penalty zone for no reason. It just wasted out because bro just thought like I'm gonna die for sure. Let me use it before dying. Exactly, I don't know. But I have seen a lot of reckless penalty zones coming in from Terisla this time here. As Team C3 Miraki's Akai, he is doing a lot of good things for his team as Lapu Lapu's all coming in as he goes in. Unstoppable coming in for our Grandeur. Yes, Hayabusa uses his Quad Shadow, tries to escape, but will be taking out the double kill coming in for Hayabusa. As Contract Killer will be in a really tough position, not having the flicker, might be taken out, but he will be surviving. But this is looking like the game end coming in as the team C3 Miraki, they are marching towards, but the Lord being taken out. This might be a defend here, but Moskov will be taking out. Unstoppable coming in for Lapu Lapu here, the bot lane. The minion marches down the top lane as well, coming in the mid lane. Aditya surviving, being the only one. And the last game coming in for C3 Miraki. This was a clean sweep, and C3 Miraki made it to the grand finals of the lower bracket here, Shinji. What do you think about this match? Damn, bro, it's like C3 Miraki were giving the Phoenix Esports a comeback kind of hope. I was like, I saw Team Phoenix got some turrets and got some kills, and I was like, okay, I guess they gonna do a comeback. But Team C3 Miraki were like, wait a minute, we won't let you in now. It's gonna be our clean sweep. And here we are, like I would like to say, Akai, the hyper from the side of Team C3 Miyaki, he was really playing very well, even with the YSS, even with the Akai. Bro, damn. I mean, I have to ask him, bro, what are you made up of? The way you were playing. When you play YSS, you security kills. When you play, utility, tanky heroes like Akai in jungle, you just save your teammates. That's how a, good player is.
Exactly, exactly. But the last game, man, how the Akai, like during the last fight, where he used the roly poly to get the Terizla there, and the way he was taking the turret damage for his team to go dive in and fight there. And they did manage to win as well, and that was a really good and amazing fight coming in. C3 Miraki, you guys did a really good job here. And Shinji, would you like to sign us off here? Yeah, absolutely. Uh, guys, congratulations to Team C3 Meraki for moving to the grand finals. And yeah, Team Phoenix Esports, don't let your heart down, guys. You guys can come back stronger next time. We hope like to see you next time beating C3 Meraki up because this time they did this. But best of luck for your comeback. And till then, me and Jeff, we are signing off. Bye bye, guys.
Hello and welcome, guys, towards the Metaninza launch series. And today's it will be the semi-finals, match number two, and the two teams are actually will be an interesting game between them. One is YAMA Esports, and another is none other than IGN. And with me, a crazy person is here, Jeff. Yesterday also we have cast, and the game was, I think, it was very great for now. Exactly, Wusu. Yesterday's game, the C3 Meraki versus IGN, and I am thinking that we might see it in the grand finals of the tournaments here. But anyways, currently the matchup is between IGN and Yama Esports, two of my favorite teams coming up in the battle here. What do you think, Wusu? Who might come here as the victorious? The victorious will be depend upon the winning, the picks actually. What will be the pick and what will be the ban? But we are looking towards the ban for now. I think the favorite ban, a long time ban, it will be Kalia. Might be. We might also see a Vaksha, but no, both of us are wrong. We saw the Gato coming in. The AOG will not be given this time to Team IG and the Gatot Kacham, and he is like a permanent ban for now. I don't know why. But the Uranus, the Sandbag, the unlimited heal coming in, that's the good. That's amazing. The actual bans coming in, from IGN. I guess it might be the bans coming in from yesterday, especially for the Uranus, man. What do you think about it, Usu? Yeah, yesterday's ban. Yesterday we also see the Gatot Kacha from the side of the IGN, where they have actually execute the game very well and control the whole scenario. But I will just take you towards the before the BO3 final match of yesterday. So it was like C3 Miraki, where they was playing the Gatot Kacha, where they was also lacking behind with the Gatot Kacha, and now we can able to see the changes. I think they have banned for that. How actually IGN played the Gatot Kacha in the BO3 match number 3.
The fact that you mentioned Gatot Kaч, man, it reminded me of that one cartoon. I forgot the name, but that cartoon. Everyone must Yeah. have known, yeah, the cartoon in the childhood, man. But anyways, let's ignore that. We'll be jumping into the draft here with the Baksha, the anti-heal monster being banned off, as well as for the 1-1, the jumping lady coming in for the ban list. And for the IGN, it looks like IGN sure hates Yushin Shin, man. They don't want to let any team play YSS here, but the last ban of the first phase will be coming for the IGN here. What do you think, Wusu? What is it going to be? I think it will be jungler kind of. I think they can go for uh, Hayabusa, I guess. What do you think? Might they? They can go for a Hayabusa. They can also go for a Lapu, the EXP ban, since they don't have the first pick. And Yama Esports sure do know that trick. Everyone has a Yeah. trick up on their sleeves, but the Kalia, the Tsunami Slam will not be given towards a Yama Esports this time with the picks coming up. What do you think, Wusu? Is it going to be a jungler or the EXP or the mid coming in for the first pick here? Take your guesses. The guesses will be one more time. I'm looking for the Farsa as well as like yesterday's pick. Yesterday it was also the Farsa at the first pick as well as the first corner side. And about the Kalia, what I was actually looking for, this special hero is getting banned because of that tsunami slam. But I will be happy if I will able to see that character in the whole game. Oh, we can see the puncture coming in for Lancelot here. The first pick, Lancelot coming in from the Yama Esports. Hayabusa being left open as well as for the Lapu Lapu and Phobius being left open. I'm kind of excited to see IGN's Meteor going in for the Phobius or maybe a Lapu. But they have a lot of tricks up on the sleeve, especially for the V-Witch's signature, the Farsa being left open. But no, we'll be seeing Aaron going for the Grandeur as well as for the V-Witch going for the Kimi already. Two really good monsters coming in, especially with the Kimi dealing out the damage and melting down tanks. Like, I have not seen much of the Kimis melting down tanks, but this Kimi, particularly the V-Witch's Kimi, man, I saw him melt down tanks like butter here. What do you think, Wusu, about it? Yeah, the Kiwi will be the actually great pick, and yeah, I was looking for the Pasa, but it was not at the same place where I was looking for, but it is at the second section. I think they can just take up the whole game, but Kimi pick actually it will be something kind of interesting because they have already have the Granger towards the gold lane, or might they are planning something else at the gold lane. Oh, look at that. Wusu's favorite MM coming in. Moskov on the side of Yama Esports. As well as for that, we can see like the Farsa coming in and IGN going for the counter pick for Lancelot for the Phobia coming in for the Phobias here. The dash disruptor here. He will be using his passive to especially for the Lancelot and for the disruption. Like the cancellation of Farsa's ult. Phobias will be a menace, but let's see what the bans will be, the last two bans. But anyways, let's ignore the Yama Esports ban for now as they don't want their Phobias to be countered. They banned CC here. Wusu, it is a really strategical ban. You take the draft from here. I'll be back in just 2 minutes here. Yeah, so about the draft now, the currently scenario is that they have actually go for the Hayabusa where I was looking for Yamaya Esports, a great ban, and what? Hilda, a crazy ban for the another time now, and now it will be the one ban from Yamaya Esports where I think they can go with kind of roamer because they actually won't pick the roamer IGN, so I think they will shut down that. But no, it is another ban. The pecs will be too Ooh. crazy. Look at that. We can see the Hilda being banned off. Like IGN, they did read Yama Esports' strategy here because Hilda would be a really good pick here since Yama Esports, they have the aggressive picks coming in. But yeah, IGN, they could have banned something for the AoE CC since Farsa definitely needs a set here. And for the Yama Esports, they need a set, especially for the Farsa and Lancelot. A puncture coming in and the last hit kill coming for Lancelot will be a really
critical thing here. But we can see the IGN going for the same strategy here, going for the tanky jungler. The respect will be going for the Fredrin here, as they banned off. Oh, no wonder they banned off CC, man. They don't want their frontliners to be melted off by that CC's true damage. But what do you think YAMA Esports true picks are going to be? They are lacking EXP as well as for the roamer here. What do you think, Wusu? I think in the current situation they will go for the roamer as well as the AXP laner roamer, but I was looking for Ooh. was something else, but they have taken up the Tigreal, great pick, but Edith, I thought they can go for a Glook, but still it was open. But Yama Esports planning something else for the whole team because they have the two tankies kind of in their side. The fact that Edith can convert all her defense to the magic damage when she transforms for the from her altar there. That would be really amazing to be seeing, since Yama Esports, they have gone for a really good sustain as well as for the damage. They have the 4 damage as well as they have 2 defense, I mean like sustainers. Especially for the Edith, man, she can deal both the damage as well as sustain. So that's what I'm looking out for. And for the Yama Esports, they have gone for a really strategical pick here, but the IGN will be completing that draft with the Kufra coming in, the balls, man. He got the balls of steel. He will be using his huge hands to be not the damaging, the stunning the enemies for the huge AoE CC here. But let's see what the pair. Let's see what the gameplay and the coordination is going to be. Wusu, who do you think has won the draft here? Draft is pretty much crazy from the both the side. I would able to see the crazy Kimi pick towards the mage lane where how she can actually execute her plan and game. For now, the Granger, as we saw in the early basis, Granger is actually a great pick because in early phases, Granger can dominate the whole match very easily. But now it will be the deciding phase where they have the Moscow with the gold lane, where Moscow can easily get that minions damage it simultaneously, and after that, he is a very unpredictable hero in this game for now. Exactly, especially where every time I see Moscow, it's in my mind, he can be split pushing on the other side of the map. The team fight will be on the other side of the map. He'll be coming for the other side of the map as well for the team fight as well as for the push. That's what I love about Moscow, man. He will not be attending the team fight. Like, you will think that he will not be attending the team fight and will be going for the push, but instead he will be using his ult really properly and will be attending the team fight as well. So what do you think about Wusu? Your favorite MM, man? You should know more about him. The MM is very crazy. If like we are losing a match at turret, then we have like Moscow. He can directly goes to the enemy's turret and directly hit it. So that thing I want to look where we able to see in the ranked matches like that type of game. So I think uh, for now, they are just clearing up the jungle towards the Lancelot. She is also trying to take up the purple buff, but after that, and the XP laner, both the XP laners are playing pretty much secure and freely. And Kimi have also rotated towards the XP lane too. Yes, definitely. I mean, like both the teams, EXP, they are playing passive as well as for Aaron the Creator. He will be what do we call it, harassing the Imperial there, as Imperial will not be able to farm that peacefully since Aaron are going for the last raids, and the Kufra charging in. That might be a catch. No, he missed that. But we can see the turtle spawning in 10 seconds here in the mid lane. We can see the Lancelot going for the ambush. Yeah, the ambush have been going for that, but Kufra, a crazy jumping ball, is rotating towards the bottom side towards a turtle. But for now, both the players haven't taken up the position. But look, that Kufra, he was actually taking up the position to capture one of them, but still the plan didn't execute that properly because they got the safe position. Exactly. The thing about I like about IGN here is that whenever there's a turtle fight, they would either make their MM be their own. Oh, that was a crazy turtle fight. Actually, a good slay, but there one more kill in their hand. Kupra got survive his whole game for his teammates, and that Kimi will harass with that instant damage, continuous gameplay, and will take down a crazy game. And yeah, they just lose their roamer too. A crazy start. Yama Esports.
little bit in problematic situation for now. There is not that much of gold advantage for this, but look at that replay. How the Lord instantly swept, and actually it gets stolen from the hands of the IGN. But still, they managed to win a little bit of the fights in between the Lord, and game is in their hand for now. Ooh, look at the fight going on as a Neko's queen will be taken on by the Kufras. Huge hands there. And we during the turtle fight, you notice one thing how Aaron got a soloed kill by the Moskov there. That was quite the bad trade, I would say, since IG and they lost their goal leaner, and once Moskov is spread, he can be a nuisance to the enemies here. Yeah, but you know a thing, like the players actually should focus on not just playing, also downloading the Metaninza app and just have that good experience with looking towards the tournaments and just going for their instant gameplay with an crazy finishes. What do you think like Exactly. about that? The Metaninja app, when I downloaded it, it was such a easy and fun to be checking out, especially with the including games inside that place. That's a good thing to be going for. Especially check out for the Metaninja app, guys. Be sure to download it from your Play Store. And without further ado, we'll be jumping right back into the game here. So look at that, the second turtle spawning in, both the junglers going in, the teams forming up, getting their position up already. Look at how the roamer crank is hiding in the little bush. Yeah, the roamer is hiding on the bush. The crank, I think he's planning to directly capture one of them in his abilities, but for now both the players are trying to take up that player, but a lot is in low HP, and yeah, they got that turtle. For Ooh, the now the fight turtle. also executing by the both the side. Look, that Kofra jumping ball have been taken down, trying to take another hero, but for now I think both the teams will play securely, but this one he can't escape that easily. Trying to escape, Ooh. taken down. One more initiate fight. A bad decision for that. I didn't think like this player should like take that much of fight in the whole match. No, a bad thing about Phobius is whenever he goes in, he can't come out. He has no way to escape. He needs to keep on fighting, regardless he survives or kills. And that's a bad thing about Phobius, man. Whenever he fights, but anyways, that was a good thing. Since he took out a Riveria there, since Edith was taken down by the Meteor here, he got the true one KD as well. He got a little bit of farm coming in, but the top lane fight being engaged here. Okay, we can see a top fight. The top fight might able to see, but for now they are just clearing up the jungles, clearing up the minions and the top. I think Granger want to take up that minions and go towards the whole base, but for now this fight was that interesting towards at Blue team hero has been slain. sorry, the fight will be go interesting for now, but looking towards the Kimi's instant fights, instant continuous pokes, it will taken down, and I think it will be end. I will just back in a second. Okay, so we can see Riveria being taken out and the bot lane ASAP Kyle will be going in, getting the bot lane turret secure as Team IG and they are going for the turtle. The fact I like about Team Yama's jungler is he goes in, he gets that turtle regardless of what he wins the retrieval, but not this time as he will be taken out as well as for the turtle being secured by Respectia and the mid lane turret might be taken out. Crank having his ult, might be going for the perfect area, but the Kufra going in using the dash here, but he will not be able to use the ult there and he will be disrupted, but he will be using the flicker to run out as Meteor goes in, tries to get a damage, but the Moskov going in will be destroying the top lane turret on the off screen here, but the Meteor, he might be taken out, and yes, he will be taken out by Neko's queen here as IGN. IS Vivage goes in, uses that ult, will be taking out the Neko's queen, but will be disrupting the Neko's ult there, but will not be able to secure any kills as the Moskov will be farming freely now, but we can see a really close battle coming in with the 2k goal lead coming to from the side of Team IGN here. The bot lane turret will be taken out, the top lane first year also being taken out, as we can see in the instant replay, how the Team IGN, they managed to do a lot of things in there as
Vivich went in, gave the vision, and Lancelot was not able to do anything. He panicked a little and he choked Yeah. on the referee. Right, the game have now clear in the hands of the uh, IGN, where they have the extra points actually. Looking towards the goal, they have like a 2 key goal advantage as well as 9 points in the hand. Where for now they also leading towards the whole jungle area. They have kind of 70% of advantage, 70% of vision of the whole map. They already clear the Mhm. starting 3 turrets, and now they have 3 turrets in the line, and after that more 3 turrets, and the final. I think they will go for the top lane because all the players are actually holding on that lane because Lord is going to spawn in few seconds, but for now, yeah, the minions have been cleared by the side of the YAMA eSports, and I think they have to plan something for now because they are at the losing factor. It's a round one, it's a game one, so might they can just learn from this match. But for now, Lord have been initiated from the side of the IGN. Okay, before we start anything, I would like to note something down as how Lancelot is going for the tanky build here. If we get a look on the or their builds there, but we can see the meteor going in. Yeah, the fights have been initiated by the both the teams where Yama Esports is trying to go towards a safe area, but for now, one more instant takedown might it will happen, but what? Lancelot will save his teammate for now. They will IGN will just clear up the minions and they will try to plan something else because Lord is marching from the center lane and they have to take the Lord in the Yamaha Esports base. Exactly, but did you notice how Granger outplayed the Riveria, the editor there, with a little HP coming in, but the distance was quite high, but I would not make it in a defense as well as the outplay was coming in from the Granger. But we might see an Yeah, engage coming in from the mid lane side here. Blue team turret has been destroyed. yeah, the engage is also cool, and well, they just got at that turret in their hands. For now, it will be like few more turrets is remaining to just take down the whole game. But see that Moscow actually used his ultimate, but he didn't appear on that position. I think if he appeared, he might get a Kimi kill. Mm-hmm. But you know, a hard fact about Akimi here, she got the queen's, I mean, like the blood wings here, so it won't be easy to be catching Vivek here, the Kimi, as well as for the respect. He went for the brute force. He will be getting the defense over time he fights, as well as for the movement speed coming in for him. But Aaron that creates, he knows what he's doing, and his grandeur deals the damage which is not expected during the late game or towards the tankiness as well. But we can see the roams coming in really late as the encourage and the dire hit coming in from Fovius and Granger there, but it's quite late, and I don't think so. After 12 minutes, they will be getting the roam. But anyways, the map control is over towards the side of Team IGN here, towards the best of three, the game one. It is not looking good for the side of Team Yama Esports. They need to make a good set coming in from their side to make a comeback here. Yup. And look towards that Kufra is actually trying to give visions towards the team, but for now, Yama Esports is just farming, just getting that level to get in the higher up advantage. But for now, 4K gold disadvantage is too high. But look at Kufra, he's still waiting for them and get the jumping ball. Soon we will able to see that jumping ball. But look at Kiwi trying to give some of the damage, some of the harassment towards the opponent team, forcing them to just go back and give this area in our hands. Exactly. We can see the Lord spawning in 12 seconds here as the top lane, as the bot lane will be clear, I guess, or is it going to be a destroying on the bot lane? They are baiting the enemies to go towards the bot lane, so they will have a easy Lord, I guess. The IGN might be planning something, but the Radiant coming in for Zozin here, he won't be taking enough, I mean, like, he won't be taking more damage from Parsa as well as for the Nekos, I mean, like, for the Reveria, the edit here, as Tigreal will be getting zoned out here. You might see a Lord fight coming in. Yeah, for now, Yama Esports, they can't do anything for now because the match is not in their advantage, not in their favor. Kufra is going directly in
and trying to do that game for now. The jumping ball have been started and one more fight initiate. Farsa will try to take down one of the player and yeah, Fredrin will go for that kill, but Kimi will help their teammates to get that crazy damage and outburst the whole opponent team for now. Forcefully stand behind to healing area. YAMA Esports one more time a dominating fight from the side of the IGN. Exactly, Team IGN. Oh, we Ooh. can see that monster kill coming in on Neko's wife from Aaron here. Oh, that was amazing, but the Lord marching down. This might be the end of Team Vayama Esports for the first round here. Yeah, the first round might it will be end, but still Lancelot he is trying her best to take down this fight, but the Lord have been going towards the final base, but for now Edith is trying to defend it, and the defense get towards a success, but looking towards a minion, they are trying to take down one and one minion for now, but I think they might push before the Lord. Look at that instant replay, and what is your like thoughts in this Farsa ultimate? The Farsa ultimate, the way she was using the ult from that really huge distance, that was the green flag coming in for Yama Esports that their mage is absolutely good. I mean, like, why would they take a mage who is not good in their team as well? Because Yama Esports, I know their standards, they take things seriously here. And this match, they need to take it seriously as well. But without any judgment here, we can see the fights coming in from both the sides here. And the thing I like about Team IGN is, oh, we can see the Zozen going in. Yeah, the fight have been initiated by them, but they will taken down the Kufra and Yama Esports just trying to take one more game in the head, but the Kimi will help the teammate to give that instant burst damage, but Farsa will do her best for now. She's also under low HP, but forcefully behind, stand behind to just go towards defender. And look that Kimi giving up the crazy damage one more time. And now the team will actually understand how to go with the game and the whole scenario. But uh, if you are also looking, viewers, if you are also looking up towards upscale the whole your gameplay, just download the Metaninza app and enjoy a whole esport journey. Yes, guys. Be sure to download the Metaninja app from your Play Store. And if you guys are enjoying the game so far, be sure to like and subscribe to the stream, guys. And as we can see, the battles coming in, both the teams are not backing off. They are fighting back to back, but with the 2K goal lead. I mean, like Yama Esports, they managed to recover the goal gap here. It's only the 2K goal gap. They will be able to recover it. But as we can see, Aaron is farming up. The Lord coming in. We might see a last battle coming in, as even a slight mistake will lead to the defeat of either one of the teams here. As this is already the 16-minute mark, the respawn time will be huge, and the Holy Crystal coming in for VVH here, the damage will be high. The tanks might be melted this time. Yeah, but looking towards a position where Yamaha Esports already get that higher up advantage, but for now they will try to disrupt their advantage. IGN is going for the one more victory fight in their hands, and yes, they got that one more slain for now. And Tigreal have been taken down. Three of the heroes are remaining for now, and Fasa a crazy game for now, but this is the dead end for them. This is a victory for IGN. Game number 2, BO3, match number 1 in the IGN hand. Exactly, the battles coming in from IGN. Those are amazing fights coming in, but this is a best of five, guys. Be sure to stay tuned. There is no going back off now. The fights will be amazing. Everything will be going on. Will Yama Esports be able to take their revenge, or will IGN go for a clean sweep this time? Yusu, what do you think? This will not be a clean sweep because they have to take 2 to 3 more round to just get that victory. So I think it will be a crazy match behind the both the team. But soon we will begin with our BO5 game number 2, where they have to take up the whole fight. Now the first pick in the side of the IGN, where they can actually decide to ban some of the heroes, some of the I think they will go for the Farsa because Farsa was actually destroying their plan. Farsa was trying to
gave the long range damage, and after that, she was actually a great team support player, was showcased by the Farsa. Exactly, but IGN, a fun fact I will tell you also about Vivich. Your Vivich's main hero is none other than your Farsa here. And anyways, look at that. IGN, when they don't want to give anyone the Yu Shinshin here, they won't be playing it, and neither will they let anyone play it. And the Yama Esports, what will be the reply of the ban here? I think they can go for the Kufra according to the first match where Kufra was actually giving up the good roaming view spot, as well as that the jumping ball was that crazy, but no, they didn't decide to ban this for now. They went for the anti-heal monster. The fact about Baksha is he deals shit ton of damages here, especially for that. Not even just the damage, the anti-heal as well coming in, as well as for the sustain. Bakshi is just the all-rounder in my eyes here for now. Uh, but the IGM going in for the Hilda ban, the Hilda ban. Ah, This might be a comfort or respect ban coming in, as someone might play Hilda on the Yama Esports. Who knows? Who knows? But anyways, the jumping lady will be banned off once again. This is looking like the same bans coming in. Usu, what do you think about it? Helda bans is actually the necessary ban for now, because if it will be fall in any team, like I think Helda will be the good impact for their teams also. But you tell one is a jumping one, but I will go for the dancing one. She's actually that crazy. If she can actually escape the fight very easily and kill the enemy in his ultimate with the instant shots, I think yeah, they will go for the Kaya for the third van. A slamming Mhm. tsunami, a crazy van. The Tsunami Slam will be taken off. They will not give Yama Esports the Kalia here. But what would be the reply? The reply ban for Yama, what would it be? Wutsu, what do you think? Is it going to be a Kufra? Is it going to be a Fredrin? Or is it going to be a Akai, since IGN Oh, loves saying thank you? Oh, never mind. It is Agato. They don't want Agato to be in the side of Team IGN here. But what would IGN's first pick be, since Parsa is open, as well as Kimi is open, Lapu is open, Uranus is open. A lot of good heroes are open here right now. yep. I think Uranus will be the good pick for now towards a team, as well as looking towards the side of the marksman. I think we will able to see Granger once again and Moscow. That impact actually I was looking for. That impact didn't came from the Yama esports, but let's see what comes next. Oh, look at that already. As we were talking about Uranus, the sandbag, the unlimited heal. But somehow Meteor, man, he makes that Uranus deal damage as well. It might be because of the emblems he goes for, but I did saw him go for the Brave Smite though. Somehow it works out for Meteor, the side of IG, and they manage to deal the damage for Uranus as well. But what would be the counter here? CC is open, Lapu is open. They can go for the counters here, but a good matchup is always required. Yama Esports, what would be the reply for the picks here? You guys have the two picks as the Matilda and Moskov. Moskov once again, and Matilda being picked off. The Matilda Airlines, man. I love seeing that, but with the Moskov matchup, I don't think so. It's gonna be that perfect, since they can go for the Alpha though. Alpha Matilda combo always works out here. Yeah, but for now, Moscow, they are trying one more time a Moscow gameplay. I think they surely learn from their mistakes, and now they will just execute the good gameplay from their side, and I think it will be a game changer match. But if it's be same, then it will be the bigger problem for Mhm. Yamaha esports. But IGN looking for them with the two picks and the Farsa. If you will see the Farsa, you will able to see the Farsa in a blue side only. Whichever team is at the blue side, they actually pick only Farsa for the mage lane. From yesterday's Exactly. match, we are looking of the Farsa only. It's Siberia. Exactly. The blue side, the first pick, the left side, always the one where they get the Farsa, but to cancel Farsa's all, we have Matilda, we have Moskov, we have Fredrin. I don't think so. Moskov was a perfect, I mean, like a Farsa was a perfect pick here, but
since it's a comfort pick for Vivek here, he might be able to cook up something here. But we can see Aaron again going in for the grandeur here, as the Yama Esports. They will be going towards the bans here. They should ban up the roamers as well as for the May. I mean, like for the jungler here, they can go for a tanky jungler ban already. But let's see what it would be. Yeah, the tanky jungler will be. Oh, they will go for the crazy ban Hayabusa, which is actually the another favorite hero of mine in the whole game for the jungle side. Okay, okay, we can see some amazing stuff coming in. We can't say anything already, since it is looking good for both the teams as Hayabusa, the backline hunter, will not be given to IGN here as the ban will be coming in for IGN this time. What do you think, Wusu? What would it be? Team Yama Esports, they are lacking the EXP as well as the mage here. Okay, here they are going with the Kennedy as well as Lancelot. Oh, what? A crazy ban for now. Lancelot is not more open because I think now the Yama Esport don't want to lay hands on Lancelot from the side of the IGN. So IGN they need to think about the next jungler pick. But for now it will be the ban and they got the ban with CC. Okay, the CC coming in. The CC man, the true damage will not be giving in to Yama Esports here, and they will be locking in the Phobias and the Kadita being banned off. That's a good thing coming in, as Kadita would have disrupted Farstar really badly here. But the Assassins being banned off, as like Hayabusa and Lancelot coming in already. That's kind of a good thing, but since what I've seen for now, Aaron, man, he goes in for the tanky jungler in this tournament. Since yesterday, he's been going for it. But his signature, I won't say the signature, but his tanky, one of the tanky as the carry hero as well. The Fredrin has been picked off by Yama Esports, a jungler here. But let's see what would they will be replying with this, as they have the two bans coming in. I mean, like two picks coming in. Yeah, the true picks will be the true interesting factor for now. But Fedran, how we see about the Farsa at blue lane, now we are able to see the Fedran at the red lane only, where whoever at red side will pick up the Fedran first. But now the crazy two picks. First, I will go with the Akai, one of the favorite jungle beast in my looks. Let's Ooh. see what will be happen for now. We can see a Khalid Rome coming in as Akai Jungle. I already told you, right? Respect will be going for the Akai Jungle here. I mean, like, Yeah. you can call me Prophet Jeff, who knows? I can predict future. Nah, just kidding. I'm just playing around. But anyways, we'll be seeing the Akai Jungle coming in, as Khalid will be going for the Rome here. And for the side of Team Yama Esports, they will be going for the annoying butterfly lady. The Zushin will be picked off with the wishing lantern here. As the drafts are complete, we can see a really good picks coming in from both the teams here. As Yama Esports, they have the jungler, tanky jungler alongside Matilda, so they will not have any problems while rotating. As well as for the front line here, as Phobius is also there, he can go in and charge like a wild boar here. But IGN on the other hand, they went for the Akai, they went for the Khalid, they went for the Uranus here. They have the tankiness, they have the damage, as well as for the Parsa and Granger coming in. It is looking good for both the teams. For now, it'll be for the synchronization as well as for the gameplay. Wusu, what do you think? The synchronization and the gameplay will actually matter on that, but the Fedrin, the crazy pick for now, I think it will be the interesting towards the jungle lane, but after it farm and get it level up, and I think this will be a crazy game from their side, but see the Zushin is helping their teammate to just get the early level as soon as possible with the red buff. Exactly, both the junglers are being helped out. I mean, like, both the junglers are tanky this time, so like the tanky jungler meta might be not might be, it is still around. But in my opinion, a assassin jungler is much more better. But in this comp, yeah, a tanky jungler always works out. But we can see Riveria showing off that emote here. I mean, like, that emote is kind of a good thing. At the same time, it's a romantic thing coming in, but a lethal fight coming in, and it'll be secured for the red side.
Yeah, the secure might come, but I was looking for the first fight, the first game, but it get cancelled, and now both the players are just, both the teams are actually just playing cool, calm gameplay from their side, but currently they are just taking clearing of the minions, and I think soon they will begin their fight. I want to see that first KO. Which team actually will get that first KO for now? The first KO we might see at the top lane side as we can. Oh, never mind. It's just the thing to be disrupting the YAMA Esports jungle here as they will be taking up the crab, the little crab here. The jungle killing crab will be taken up from IGN here as YAMA Esports jungler ASAP Kyle will not be getting the level 4 for the turtle fight here. It is a really bad thing, but we Ooh. can see Rosin being really badly in a really bad position. But the flicker being used up. What do you think about the fight coming in? The fight is going to incredible, but here the turtle, the first fight scenario will be popped up. Till now it's a 0-0, and I think it will be cross now. One team will get that one, but soon it will be get the one. They are just trying to take up that Akai. Akai will go towards the back position for now, but Zushin will give that craziness towards the hand, and here Akai will get that turtle, and the game is in their hand for now. But still, this one player, he is actually going towards the whole game, and I think, yeah, they will lose another player or not because Zushin trying to take that one instant fight, but no, he couldn't able to make that distance. Exactly the way the Raging Sandstorm was used by the Khalid there, catching 3 enemies. But sadly, due to no follow-up, he was dead there, and the turtle going in for the side of Team IGN. Oh. Has been Roly slain. Poly being used up from Akai really well. I liked how he used the alt and just went in to sweep in the turtle here. As well as for that, we can see only a small trade coming in, but the way our Phobius went in for the back line, I mean, like for Farsa here, cancelling her alt, there was a smart move as well. Yeah, that was actually the goodest thing which happened for now, but now it's a 1-1. A first KO happens, a second KO also happens by the side of the different teams. So about the gold, we are looking like it's a very less difference between the both the teams. But for now, Farsa, oh, she got that Zushin. Team hero has How she survived in that instantly, and it was a crazy game from the side of the Zushin. A good escape and good game. For now, the fights are actually at a slowdown, and they will clear up the jungle. And the purple buff is trying to take, but I think here the game was actually the craziness and crazy stun for now. Exactly, as we can see in the replay here, the fight was immense. Like it was a really intense fight coming in for both the teams here, but Moskov came in, swept in a kill, and they managed to back off without any more casualties here. As the turtle comes up here, and the fight will be engaging. Yeah, fight will be engaging, but as well as by watching this fight, do not forget to download Metaninza app and have fun with the amazing tournaments and amazing gameplay like this. How they clean up the turtle. The turtle will goes in the hands of YAMA Esports. Veteran will take off that, but Zushin will take down the Takai. A game is still on the lane where Zushin is actually helping the teammate to get that player in their hands, and actually they got it. A crazy pick there. Uranus might be getting that trouble. Oh, that Zushin is not leaving me. Why? Yeah, the Zushin, man. I told you, right, the way Zushin is, it's really annoying to be dealing with, especially with the second skill coming in. That's the most annoying part. Yeah, that was actually the annoying part where the team is actually taking up the fight, but for now at the XP lane where both the teams are actually holding up, we're looking up towards the gold lane side. Both the teams are actually at a good position for now, and the level advantage in the hands of the Yama Esports. Yama also have that craziness in their hand for now, and Granger will get that damage.
The way ASAP Kyle went in and in the turtle, that was a good thing. Hindi dapat para tayo bang sa That was actually the crazy dapat scenario, but the fight is still upgoing where the team is pushing towards the ano mid po lane. They are just trying to take up in their player in their hand. I think this will be the end for them, but no, ang they dog yun. have got that a little bit of the damage in the game. But Moscow, look at that. The game have been initiated by the both the team where they will take down one of the player and another will be on the hands of the Dujin. Let's see. It will be the Natin na may because Akai will use that yo-yo blast Net in his chicken hand. daw with you. And yeah, they will The take down the turret. Exactly, the ASAP Kyle being taken out as well as the Riveria, but this time we can see YAMA Esports being the dominant side. They are going for the aggressive fights, as well as for that we can see Meteor going for the back line here. And this is a free turtle in my opinion, as there is no fights. Sa Yeah, look at that Granger giving up the 1-1 shots towards the Zushin. Jushin is just surviving in another time and with a low HP. A crazy instant, but yeah, they will end. I think they will get this kill. Yes, they are actually might near to that, but what? He just get that instant HP. nabipin A crazy fight between both the team for now. Hello. Pabanggala natin. Exactly, those fights incoming, especially with the Raging Sandstorm coming in for Jose and the Khalid here. Those are actually amazing, but ASAP Kyle will be going in, scooping out the bot lane turret here. At the top lane, it will be defended as Moscow is not there to push, but we can see a 4-man gang in the bot lane. This is not looking good. It is a bait coming in for IGN here. Zrozen and V, which they have caught onto the trap here. They won't be going in. They signed it up. They didn't want to go it back again, but we can see amazing fights coming in. This time, YAMA Esports dominating. We might see a comeback coming in. The fight we all wanted to see here, the upper brackets fight coming in. Yeah, the upper bracket fights is also coming in where we are looking up towards the turrets. Two of the turrets have been taken down of IGN. Both the teams are actually playing very well. In the first match, YAMA Esports where they get dominated, but now in this match they are trying to just do their comeback by winning this match. But yeah, I think their crazy pick was Zushin, where Zushin actually helped their teammate to get that instant finisher. But look at Moscow, the game, they actually started whole scenario, and I think yeah, they can start a domination where they have now 70% of the vision of whole map. Exactly, with the jungles being opened up because of the push coming in. The mid lane, the fact that mid lane turret was destroyed here with YAMA Esports having little to no damage coming in on the mid lane turret, but the brute force coming in for ASAP Kyle will not be giving any, will not be going slow anymore. He will be able to chase down the enemies with the defense coming in as much as he fights them. But the top lane side, we can see the Moskov already pushes down, the map being left open, and the Lord came back to the Lord fight here, and the Lord fight will be engaging now. Yeah, the engaging between the both the team have been taken out. The Lord is at the half HP for now, but they are just trying to win. And here the Fasa will go his crazy ultimate, but trying to take down the Fasa. But it is clean swipe. I think it will be the end for YAMA Esports for now. Zushin is trying to escape, but she also taken down by the side of the Farsa. Now they will go towards the Lord, but first they will clear up the minions, and then they can actually try to taking up the turret, the mid turret. But they have to first look towards this Lord. I think it will be the clean sweep for the Lord. The Lord will be taken out pretty easily here as IGN. They did a really good thing, a team fight coming in, as we can see at the far side. She did a really good job for the positioning with the Raging Sandstorm coming in and the follow up from the Granger, securing the triple kill, almost a maniac. But since Zushin was about to escape the VVH, the Farsa had to do his job and go for the the kill secure there, as the Lord went in on the side of IGN. They are making a comeback with a goal lead covered up, a 3k goal lead coming in with the leading of IGN here. Yeah, but at that previous replay, we also able to see that Farsa was using his ultimate, but
it get full stop because of matlab, I guess I think that game was that crazy, but for now they are just going from Lord is marching from the top lane where both the team are at hope position, but here little bit problematic situation for Yamaya Esports. And might if Yamaya Esports, if they choke this fight, then it will be end for them. And yes, Farsa is going for it. One more crazy ult by the Farsa. This is a game switching side for the both the team. For now, IGN is on that good experience position. Now IGN have that clear vision also of the map. They actually get the more than vision than Yamaya Esports. Exactly, as we can see, the tier 2s of both the top and bot lane being taken down, and the mid as the mid lane might be taken out, and the unstoppable coming in on the crank here. The air on the creator goes in, Ooh. secures the double kill as well. Oh, we can see a really good fight coming in on both the teams. The early game domination coming in from Yama Esports, but now the team IGN, they have managed to secure their position. They have managed to hold the grip onto this game now. Yeah, the position also secure, but now they are just trying to push up the whole turret and trying to take up the each of the turret, and also a team is playing with an own gameplay as well as helping their teammates. Look at that Farsa use his ultimate. It's helpful for their team to just retreat from that position, and they retreat, and now they are clearing up the Yamaya's center jungle. Exactly. Now at the top lane, we can see a red buff fight coming in. I mean, like, they don't even care, you know. Meteor will just go in. He will take the damage for his passive to be stacking up since he needs to maintain his stacks for the unlimited heal here, and the team fight will be engaged. The team fight will be engaged where the Farsa is trying to use his ability. A good flicker from the side of her. A crazy fight. She actually, it was so close to take one of them to in losing factor, but still that fight, a good retreat from the side of the Yama Esports. I think they are still lacking something behind because this match was in their hand, but now they are at the losing position. Look at that, Uranus, you know, he's like a Sudoku doll there. Whenever you hit him, he will be standing back once again. He's just like that. He's like, come hit me, I will stand right back into your face here. Ooh. With the full HP. Oh, with the gang coming in. Yeah, the gang was very great fight between the both the team where, oh my god, a crazy fight, and Zushin, she will also taken down, and there is an only 3 of them remaining. 5v4 situation is this now. I think they will take up for more players for now. And here, trying to give Granger have been doing his work very prettily where they have taken down one more Akai. Might he will use his ultimate and take one of the player in their hands, but still they are just holding up on the main base, and they actually get that final turret is on the lane where they can easily taken down that. I think it will be the end for the Yama Esports, but no, No, they they actually managed to didn't survive. come back. Hero has been slain. You know, the fact that Respect was saying, oh, the fight is still going on. See, the fight is still going on aboard the team, but Farsa is for now using his ultimate. But Moskov, can he will come? Yes, Moskov will appear and trying to take up the his fight in his hand, but still the one player is on the lane. But that player will secure. He was actually on a very low HP, but still he maintained to retreat whole game. Look at that That was a Uranus, man, the crazy. way he heals. That was a crazy gameplay from the side of the Uranus, but still, Yamaha Sports, they actually got the vision of the Lord. You know, one thing I want to note it out, how during the fight, right, where Yama Esports almost lost, the way Zushin used her flicker, man, that was so reckless, going straight up. Oh, the team fight still going on. The fight is also going on where Zushin is trying to give her teammate a blast, but here a very low HP. Both the players are trying to take up their hand, but Akai used his ability. This yo-yo, I was waiting for this only. They just take down the Moscow, the another squishiest thing in the whole game, and they actually get a good instant flick in their hand. But for now, both the teams are at good position. For I think here
this will be the end for YAMA Esports, where IGN is actually trying to take their matches. 5 players are on the lane, and the final turret will be was to end the whole game, and it is on the low HP. And yes, they got it. Another BO5 game number 2 in the hands of IGN. Exactly, those fights coming in, man. Yama Esports dominating the early game, but the late game being dominated by the IGN here. Those are some amazing fights coming in. But in my opinion, Yama Esports, they did a really good job. But during the late game, they choked a little, especially on the 12-minute mark where the Lord fight was going on. And Rushen used her ult and flicker really recklessly, going straight forward towards the Respect and around the creator Granja and Akai. She got punished for it, especially, and as well as for that, the team got punished as well. A lot of reckless mistake, but this is still a game, a best of five. The game two won by IGN here. IGN needs one more point, while IGN needs one more point, while our team, Yama Esports, they need 3 more games here. Will Yama Esports be able to make a comeback here, or will IGN make a clean sweep? Yeah, it will be able to see in the next match and the next game where it will be a comeback or not. Because I think if this will be the deciding match for the both of the team, which team are actually going to win the game. I think it will be IGN. Might they will win the game, or it will be the comeback from the side of the Yamaha Esports. They will get that one chance to get their strategy and get their synergy in the back on the lane. Exactly, exactly. We'll be waiting for that, but for now, we'll be taking a short break, guys. With a little break, a Newcastle, like the Newcastles, will be coming back. For now, we'll be signing out. It's me, Jeff, alongside Wusu here. Bye bye.
हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये गेम ऑफ कोर्स हिंदी पे होगा। सो सबका स्वागत है यहाँ पे मेटा निंजा लॉन्च सीरीज पे। बट अभी गाइस, ये है आज का अपर ब्रैकेट फाइनल्स। ऑलरेडी स्कोर सेट हो चुका है यहाँ पे 2-0। आईजीएन ये बेस्ट ऑफ 5 सीरीज को 2-0 स्कोर से लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यामा ई स्पोर्ट्स शायद से वापसी कर पाए कि नहीं। पर उसके पहले मैं हूँ आपका दोस्त शिन रियू, आज इस गेम का कास्टर, और मेरे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे जय भाई। तो जय भाई, 2-0 स्कोर आईजीन की तरफ, यामा स्पोर्ट्स वापस आ पाएंगे, क्या लगता है आपको? जी, यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स का जैसे हम लोगों ने गेम प्ले देखा था और कास्टिंग किया था शिंडू भाई, तो उस तरीके से लगता है तो शायद यहाँ पे हमें कमबैक की जो एक मौका जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मोवा 5v5 में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस दिन भी हमने देखा था किस तरीके से गेम प्ले किस तरीके से पलटा, और कभी बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे जो है हारने वाले जो हार रहे थे टीम, वो कमबैक करके जीत के ले गए मैच। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका जरूर देखने को मिलेगा शिंदा भाई, सॉरी शिंडू बता। जी बिल्कुल, जय भैया। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट 2 बैन ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे 1-1 और यूरेनस दोनों को बैन किया जाएगा। पर जो लास्ट गेम पे मैंने जो ड्राफ्ट देखा था कि एरन द क्रिएटर जो है, उनको उनके हाथों में उन लोगों ने ग्रैंडर दोनों ही गेम पे दे दिया था। तो अभी हमें पता है कि एरन द क्रिएटर का वन ऑफ द फेवरेट हीरो, और बहुत ही इजी कैरी कर सकते हो, वन ऑफ द कंफर्ट पिक भी है उनका। तो ऐसे हीरोज शायद से देना थोड़ी सी लापरवाही थी यामा स्पोर्ट्स की तरफ से। पर वो फर्स्ट फेज में पिक करते तो बैन स्लॉट पे सारे हीरोज बैन नहीं किया जा सकता, वो एक समझने वाली बात है। पर फिर भी जब वो लोग हीरो दे रहे तो शायद उनके पास कुछ काउंटर भी उपस्थित होना चाहिए। पर हम लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने ग्रैंजर को बिल्कुल नलीफाई नहीं कर पाया उस गेम पे, और इसके चलते ग्रैंजर का जो फार्म आया उसके बाद जो वो मेल्ट कर रहे थे टीम फाइट का, एकदम जो एकदम पाला ही पलट रहे थे वो टीम फाइट्स का, वहां पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यामा स्पोर्ट्स को। शायद से इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हो पाए, और देखिए यहाँ पे ग्रैंजर बैन जरूर आता हुआ टीम यामा स्पोर्ट्स की तरफ से। जी बिल्कुल, साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे शायद देखिए जिस तरीके से अभी यामा स्पोर्ट्स, क्योंकि ये शायद बेस्ट ऑफ 5 है राइट, बेस्ट ऑफ जी 5 में अगर बिल्कुल। ये अगर हारते हैं यामा स्पोर्ट्स तो आगे आईजीएन तो अगेंस्ट तो यहाँ पे कोई चांस मौका मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उनको लैंसलॉट को भी बैन कर देना चाहिए, लेकिन वो माथिल्डा को जो यहाँ पे बैन कर रहे हैं। और ग्रेंजर बैन तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर वो ग्रेंजर को न्यूलिफाई नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये बैन जस्टिफाई करता है। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अभी भी लग रहा है थोड़ा बहुत जो है रिस्क ले रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ खेलना जरूरी था। जी, यहाँ पे आईजीन बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे। वो लोग वाईएसएस को बैन कर देंगे कि यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स का फर्स्ट पिक है, और वो नहीं चाहेंगे कि ये जो हीरो है जिसका जंगल क्लियर इतना फास्ट है, इतना जल्दी जंगल क्लियर करके लेवल 15 पहुंच सकते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट हीरो। और मैं आपको आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, एमएससी में ये एक हीरो है जिसका सबसे ज्यादा मतलब सबसे तेज लेवल 15 का रिकॉर्ड रह चुका है। लाइक करीब करीब 8 मिनट भी नहीं लगा था उसको। तो शायद से ऐसे हीरोज नहीं देना जी चाहेंगे वो यामा स्पोर्ट्स की तरफ। और यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स का ड्राफ्ट खुलता हुआ गरुड़ का पिक के साथ, तो ये अभी भी एक फ्लेक्स पिक है, जरूर पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे जाएगा। पर यहाँ पे आईजिन के पास बिल्कुल मौका है फारसा निकालने का। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज्यादा मौका है फारसा निकालने का। तो फारसा यहाँ पे अगर पीक हमें होते हुए देखने को भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप बोल रहे थे शिनुदा, आपका जो प्रेडिक्शन था यहाँ पे फारसा और कैरियर दोनों पिक को उठा लिया गया। कैरियर जिस तरीके से यहाँ पे हमें सुनामी स्लैम देखने को मिलेगा, और जो उनका स्क्विशी हाइपर हुआ या कोई स्क्विशी मेज हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे किडनैप होने वाला है, वो देखने में जो मजा आने वाला है वो बस आप वेट कीजिए। जी बिल्कुल। और ये बात है कि देखिए फारसा का जो डैमेज है वो लॉन्ग रेंज है, राइट। और इसके चलते पे उनको ऐसा हीरोज लेना पड़ेगा जो फारसा का अल्टी इधर कैंसिल कर पाए, या फिर वो जहां से जब पे उसका अल्टी गिर रहा है वहां से भाग पाए। पर अभी कलिया के चलते पे उनको प्यूरीफाई लेना ही पड़ेगा उनके स्क्विशी हीरोज पे। तो शायद से थोड़ी सी दिक्कतें वहां पे आ सकती है। अगर फ्लिकर ना हो तो वो रेंज से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। और जैसे आपने कहा था लैंसलॉट यहाँ पे जरूर आएगा टीम यामा स्पोर्ट्स की तरफ से। और यहाँ पे इंपीरियल 2x जो है वो अभी भी अपने मॉस्को के साथ जुड़े रहेंगे, अपने मॉस्को को यहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे। तो मुझे लगा कि उनको शायद से यहाँ पे कुछ डिफरेंट अप्रोच करना चाहिए था। लास्ट गेम पे भी वहाँ पे 3 टैंकी हीरोज थे, शायद से वहाँ पे अगर कैरी जाते या फिर कोई भी हीरो जो मेल्ट कर सके हाई एचपी हीरोज को, अगर वो हीरो लेते शायद से कुछ अलग हो पाता। पर इस बार फिर से सेम हीरोज, और यहाँ पे एक यूटिलिटी जंगल आता हुआ टीम आईजिन की तरफ से। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बात ये है कि लैंडस्लॉट लेने की वजह से उनके पास मोबिलिटी जो मिलेगा उसकी वजह से फारसा को मार्क करना आसान हो सकता है। क्योंकि घाटक का चक्का एओजी अगर कनेक्ट नहीं भी होता है, फारसा का अगर अल्टीमेट कैंसिल होता है, तो कहीं ना कहीं मॉस्को उनको चेस करके जो फारसा को मार्क कर सकते हैं। तो पिक तो अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉस्को को लेकर वरीड हूँ। मैंने उस दिन भी वरीड था, आपको बोला था कि मॉस्को जो है पहला गेम में देखा था आपने सक्सेस नहीं हो पा रहे थे सेकंड गेम में, राइट।
तो कहीं ना कहीं जी। मैं उस बात को लेकर ज्यादा वरीड हूँ। मॉस्को को बहुत जल्दी फारसा मेल्ट कर सकती है 2 शॉट में। उनका फेदर स्टैक में 4 टोटल अल्टीमेट होता है ना, जो बॉम्ब बस्टर होता है, उसमें से 2 शॉट पे वो मेल्ट डाउन प्रॉपर कर सकते हैं फ्लेम शॉट के साथ। तो कहीं ना कहीं मॉस्को को अर्ली गेम पे और मिड टू लेट गेम पे खेली है। आप ये भी देखो, जो यहाँ पे टीम फॉर्मेशन यहाँ पे खेली है, फ्लिकर मार के जाएगा, मॉस्को को उठा के लेके आएगा, फारसा का फर्स्ट एंड सेकंड स्किल मॉस्को मेल्ट। तो कहीं ना कहीं जी मॉस्को बिल्कुल। को ऐसे पोजीशन से खेलना पड़ेगा कि जहां से वो सेफ खेल के टारगेट कर सके, और जो बहुत मुश्किल होने वाला है मॉस्को की रेंज की वजह से। जी बिल्कुल, वो रेंज जो बात आपने कहा था, वहाँ पे ज़रूर प्रॉब्लम होगा, पर मुझे लगता है यहाँ पे मॉस्को से बेहतर शायद से कडिटा पिक हो सकता था टीम यामा स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि कडिटा के पास फर्स्ट किल पे वो इम्यूनिटी भी रहती है, जहाँ से वो बच पाएँगे अपने ये कलेया से, और दूसरा है कि उनके पास जो बर्स्ट डैमेज है, वो अगर चाहे तो पेट्रीफाई कॉम्बो करके आराम से फारसा को निकाल सकते हैं, और उनका जो सेकंड स्किल है, उससे फारसा का अल्टी कैंसल भी कर सकते थे। शायद से उनका एमएम पिक सेकंड हाफ पे भी वो लोग रख सकते थे, शायद सेकंड बैन फेज के बाद भी वो लोग पिक कर सकते थे। और ये जो अर्ली एमएम पिक हुआ, इससे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा पता चल गया कि कौन-सा हीरो कहाँ पे जाएगा, क्या डैमेज होने वाला है, कौन डैमेज डीलर होने वाला है टीम यामा स्पोर्ट्स की तरफ से। तो वो ऑलरेडी आईजीएन को पता है यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग सिर्फ यहाँ पे मेजेस बैन कर रहे हैं। तो बहुत सारे मेजेस का बैन ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे हैरिथ भी बैन, तो 2-2 गोल्ड लेनर बैन हुआ। तो इसी के चलते पे क्या हीरो आपको लगता है कि आईजीएन के लिए अच्छा रहेगा गोल्ड लेन के लिए? यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेटा हीरो अभी भी इनके पास बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। लापू लापू यूजोंग जैसे हीरोज बचे हुए हैं। लापू हुँ, लापू हुँ। भी अगर लेते आईजीएन फॉर एग्जांपल, तो उनके पास सस्टेनेबिलिटी जो आने वाला है, यहाँ पे हुँ, मेल्ट हुँ। करने के लिए उनके पास ज्यादा हीरो बचेंगे नहीं, क्योंकि मेल्ट करने के लिए फिलहाल तक अभी फारसा देख रहा हूँ। लापू लापू या यूजोंग जो है, उनका लाइफस्टाइल जो है, उसकी वजह से क्या है, रीजन की वजह से वो सस्टेन कर लेते हैं। ऐसा ही कोई सस्टेन हीरो देखने को मिले तो दिक्कत हो सकता है। इसका देखिए सीसी, जो आपका एक्सप्लेनर का विनिंग लेन हीरो माना जाता है, एक्सपी को जो यहाँ पे सीसी को ले लिया गया है, तो दिक्कत तो भर ही रहा है। मुझे लग रहा है यामा स्पोर्ट्स को थोड़ा सा संभाल के कोई अच्छा दो ऐसा हीरो पिक करना चाहिए, जिससे बहुत ही ज्यादा काउंटर भी कर सके और सस्टेन भी कर सके, क्योंकि राइट नाउ उनको सस्टेन की बहुत ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू आईजीएन। जी, बिल्कुल। और ये जो वॉल क्रिएट कर दिया है इन लोगों ने, फ़ारसा के आगे 3-3 जो हीरो हैं, जो जितना भी डैमेज आने वाला है, जितने भी लोग आगे आने वाले हैं, उनको रोक सकते हैं। शायद से इस फ़ारसा को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर एओजी अगर कनेक्ट नहीं हुआ, या फिर अगर लैंसलॉट पीछे की लाइन पे पहुँच नहीं पाए, अगर बैक लाइन को जाकर मार्क नहीं कर पाए, तो यहाँ पे फ़ारसा को बहुत ही आसानी से वो डैमेज देने का अवसर मिलेगा। पर अभी 2 पिक बाकी है आईजिन आई मीन यामा स्पोर्ट्स की तरफ से, तो वो लोग शायद से यहाँ पे कुछ अच्छा पिक कर सकते हैं यहाँ पे। पर उन लोगों ने यहाँ पे वेक्साना और हिल्डा का पिक किया। हिल्डा क्यों, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। शायद से वो कोशिश करे कि ये विनिंग लेन मैचअप करे, ताकि हिल्डा को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वो हील कर सकते हैं बुश के अंदर, और उनका जो मोबिलिटी है उससे वो भाग भी सकते हैं सीसी के रेंज से। सीसी का जो डैमेज आता है, जो स्लो डाउन भी होता है, उससे भी भाग सकते हैं वो फर्स्ट स्किल से। तो शायद उस वजह से यहाँ पे हिल्डा पिक किया गया। पर वेक्साना, उनका डैमेज बहुत ही अच्छा है, एंड उनका जो टॉन्ट है उससे कुछ जो अंदर आने की जो कोशिश होगी ये करेगा, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। पर क्या वो इनफ होगा? क्या वो डैमेज इनफ होगा मिड लेन के लिए? वो एक बात ज़रूर रहेगी हमारे लिए यहाँ पे जय भैया। जी बिल्कुल, यहाँ पे डैमेज की बात तो चलिए, वो तो सीसी वेक्साना अच्छा देती है, लेकिन उनके पास मोबिलिटी कहाँ है भागने के लिए? हुँ, हुँ। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न राइट नाउ ये है कि उनके पास मोबिलिटी कहाँ है। आप देखिए, अगर टीम कॉम्बिनेशन देखते हैं राइट नाउ, तो यहाँ पे देखिए क्लॉट को भी लिया गया है। क्लॉट का मिड टू लेट गेम पे अगर उसका 3 कोर आइटम बन जाता है, हुँ, उसके हुँ। बाद वो किसी भी हीरो को प्रॉपर मेल्ट कर सकता है अपने अल्टी के थ्रू। जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी यामा स्पोर्ट्स को काफी सेफ खेलना पड़ेगा, अर्ली गेम से ज्यादा फाइट नहीं ना ले, क्योंकि फाइट लेंगे तो सस्टेन करने के लिए उनके पास ऑलरेडी 3-3 हीरो है जी। एलजीएन के पास। तो कहने हुँ, हैं हुँ। कि यामा स्पोर्ट्स अगर सस्टेन करता है और मिड टू लेट गेम जाता है, तो कहना कि मॉस्को ये गेम निकाल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ हो सकता है यामा स्पोर्ट्स के लिए। बाकी देखिए, ये इसकी एक गेम जो है स्किल का ज्यादा है, लाख कम और हुँ, स्किल ज्यादा चाहिए आपको लाख को हराने के लिए। तो कहना कि अभी जी। हमें गेम प्ले में शायद वो ज्यादा कंफर्ट पिक की तरफ गया है, जिससे कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो जीत सकती है थर्ड मैच, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लेके गेम प्ले पे ये खेल रहे हैं। तो कहना कि इंटरेस्टिंग जो मैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अर्ली गेम पे अगर ज्यादा वो एक्सटेंड करते हैं गेम, मतलब कुछ ज्यादा ही थोड़ा देर आगे मतलब पुश करते हैं खुद को, तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि फास्ट का डैमेज फर्स्ट एंड सेकंड स्किल से भी काफी आता है, जो अर्ली गेम पे हेल्थ कम होने की वजह से हेल्थ बार आपको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, और इसी के चलते हम बढ़ेंगे गेम 3 की तरफ। यहाँ पे आईजीन के पास है मैच पॉइंट। यामा स्पोर्ट्स को शायद से अपना जितना भी लक है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा इस गेम के लिए, क्योंकि यह बेस्ट ऑफ 5 सीरीज अगर यहाँ पे आईजीन जीत गई, तो यामा स्पोर्ट्स को वो लोअर ब्रैकेट पे डाल देंगे और खुद अपने आप
अपर ब्रैकेट फाइनल्स पे, आई मीन वो ग्रैंड फाइनल्स पे पहुंच जाएंगे। पर इसी के साथ गाइस, अगर आप लोगों ने मेटा निंजा अभी तक डाउनलोड नहीं किया, बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, क्योंकि लेट योर स्किल्स स्पीक एंड यू नीड टू डाउनलोड द गेम राइट, आई मीन नॉट द गेम बट द ऐप राइट नाउ टू गेट सम अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ इट। बट गेम की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पे जो अर्ली गेम रोटेशन होगा वो आईजीन की तरफ से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास फारसा है और उनके पास कलिया भी है। पर यहाँ पे टॉप लेन पे देखिए दोनों ही MM 1v1 कर रहे हैं, थोड़ा डैमेज यहाँ पे मॉस्को को जरूर मिलेगा। और इसी के चलते जो अभी टॉप लेन पे है, शायद यहाँ पे एरन द क्रिएटर का HP बहुत ही लो यहाँ पे जे भैया, ऑलमोस्ट मौत को छूकर वापस आए वो। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है क्लॉड पे फोकस किया जा रहा है। चलो ये अच्छा बात है कि मॉस्को को अगर ज्यादा फार्म मिलेगा, गोल्ड क्लब मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज मॉस्को के पास ज्यादा आएगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा अच्छा प्रायोरिटी। लेकिन इसके साथ उनको ऑब्जेक्टिव भूलना नहीं चाहिए कि अगर कंटिन्यूअसली मॉस्को पे यहाँ पे फार्मिंग पे हेल्प करते रहे तो कहीं ना कहीं टर्टल जो ऑब्जेक्टिव हाथ से जाएगा, उसकी वजह से गोल्ड में जो है डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि 1000 करके गोल्ड प्लस एक्सपी मिलता है। तो वो थोड़ा सा देखने की बात रहेगी कि वो एक्सपी लेन पे भी जाना जरूर पड़ेगा उनको टर्टल के लिए। तो अच्छा बात है MM को आप सपोर्ट करो, लेकिन टर्टल भी जो है इंपॉर्टेंट है। जो टर्टल अभी 15 सेकंड में आने वाला है शिनुदा। ये बिल्कुल बॉट लेन की तरफ अगर आग देखेंगे तो यहाँ पे मिरियो की तरफ बहुत सारा डैमेज आता हुआ, पर जो स्टन विच देंगे यहाँ पे वो बिल्कुल मिरियो को बचा देंगे। पर उनका जो बैटल स्पेल था, वेंजेंस था, वो बिल्कुल इस्तेमाल हो जाएगा। और टर्टल यहाँ पे आ चुकी है और देखते ही देखते दोनों ही टीम वहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पे लेवल 4 दोनों ही कोशिश कर रहे हैं टैंक, ताकि उनको वो लेवल 4 मिले, ताकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट पे पार्टिसिपेट कर पाए, ज्यादा डैमेज और ज्यादा यूटिलिटी कर पाए टीम फाइट पे। पर यहाँ पे डैमेज बहुत ज्यादा क्रैंक के ऊपर जा रहे हैं अंदर। ऐसा खाइल डैमेज नहीं मिला मिरियो की तरफ, लो HP है। फारसा का फेदर एयर स्ट्राइक भी आएगा, पर फर्स्ट ब्लड ऑलरेडी यामा स्पोर्ट्स यहाँ पे वो करेंगे, सिक्योर करेंगे। पर ब्लेजिंग डुएट का जो इस्तेमाल होगा उसके चलते एक किल लेके जाएंगे जंगल डाउन। यहाँ पे इजी टर्टल रिस्पेक्ट के लिए 50-50 चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, 100% टर्टल और क्रैंक अकेले पीछे बैकलाइन पे वो भी निकाले जाएंगे। तो इसके चलते यामा स्पोर्ट्स को एक किल जरूर मिलेगा, पर यहाँ पे बेटर ट्रेड आईजीन लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि शिनुदा यहाँ पे गेम पे अगर आप फाइट लेते तो आपके पास डिसएडवांटेज ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द एडवांटेज। इसके साथ कैलिया को यहाँ पे जो ऑफ कैंप पे यहाँ पे मौत की जो सामना करना पड़ेगा, कि कैलिया भी कुछ ज्यादा ओवर एक्सटेंड कर रहे थे। यहाँ पे 3 हीरो थे जो है, 3 हीरो के चलते फिर तो उनको सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि अभी अर्ली गेम पे जिस तरीके से मैंने कहा HP बार कम होते हैं, तो उसकी वजह से सस्टेन टैंक को भी बहुत कम होता है सस्टेन करना, अगर आपके पास डैमेज बर्स्ट डैमेज ज्यादा हीरो हो। तो कहना कि ये गेम प्ले काफी अच्छा हमें देखने को मिला। देखिए किस तरीके से क्लॉड ने सपोर्ट किया, टॉप लेन से आया, टॉप लेन से आके अपना जो उनका हाइपर को है यामा स्पोर्ट्स का लैंसलॉट को बाहर निकाला और वहां से टर्टल का एडवांटेज साथ में 2 किल एक्स्ट्रा ले गए। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा आईजीएन का जो सपोर्ट था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अगर ऐसे ओवर एक्सटेंड करते रहे यामा स्पोर्ट्स, तो उनको कहीं ना कहीं फार्मिंग में गैप जो है टर्टल की वजह से और एक्सपी का गैप हमें देखने को मिला, तो वहाँ पे गेम जो है थोड़ा सा कठिन हो सकता है उनके लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे गोल लीड ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे सरप्राइजिंगली यामा स्पोर्ट्स की तरफ गोल लीड है थोड़ा सा 300 जैसा, पर वो ज्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर एक फाइट हुआ तो वो फाइट के चलते गेम बिल्कुल पलट सकती है, गोल लीड भी शायद लीड ना रहे यहाँ पे। पर जो टॉप लेन की तरफ दोनों ही टीम का जो फोकस है वो जरूर देखने को मिल रहा है। रोटेशन बहुत ही हैवीली है, हिल्टा पे थोड़ा सा विजन जरूर मिलेगा, पर कलिया कोशिश जरूर कर रहे हैं उनको थोड़ा पोक कर रहे हैं। यहाँ पे सुनामी स्लैम का इस्तेमाल जरूर करेंगे वो हिल्टा पे, पर प्यूरीफाई के चलते वो बच जाएंगे। रिस्पेक्ट टॉन्ट करेंगे, पर यहाँ पे पीछे जाना जरूर सही उपाय रहेगा उनके लिए, क्योंकि फाइट नहीं लेना चाहिए। टर्टल नहीं आया अभी तक मैप पे, शायद से अगर ज्यादा यूटिलिटी वेस्ट कर देंगे तो टर्टल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पर फिर भी जो पोजीशनिंग है टॉप लाइन पे अभी नेक्स्ट टर्टल के लिए वो देखा जरूर जा रहा है यहाँ पे। जी अभी पूरा जोन जो है यहाँ पे जोनिंग किया जा रहा है, रिवर कंट्रोल प्रॉपर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे मॉस्को जो थोड़ा फंस सकते हैं, उनको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे जोनिंग किया जा रहा है दोनों टीम की तरफ से। इसके देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर गेम प्ले, फाइट नहीं टर्टल ऑब्जेक्टिव है, तब फाइट करो जब टर्टल की जो हेल्थ कम हो, वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फंस चुके हैं, फारसा का फेदर स्ट्राइक हो चुका है, यहाँ पे फारसा की तरफ मार करने की कोशिश करेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। हिल्दा को यहाँ पे जो मौत की घाट उतरा जाएगा। लैंसलॉट यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने सेकंड्स की उसके द्वारा टर्टल ले लिया जाए, बिल्कुल यहाँ पे टर्टल ले लेगा। लैंसलॉट अपना स्किल का उसके आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइट जो हो रहा है यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा फाइट में यहाँ पे डिसएडवांटेज में अभी भी जो है यामा स्पोर्ट्स से। देखिए यहाँ पे किस तरीके से किल निकला है। लैंसलॉट अपना ऑब्जेक्टिव लेने में सक्षम जरूर है, लेकिन किल जो अपना गवा उसकी वजह से फार्मिंग जो उनका थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, तो वो डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है। मॉस्को का सपोर्ट अच्छा देखने को मिला, लेकिन क्लॉड यहाँ पे गोल्ड लेन पे देखिए टॉप लेन में फार्म हो रहे, तो कहना कि ये फाइट थोड़ा सा जो है सपोर्ट में जो है अभी फिलहाल आईजीएन की तरफ ज्यादा झुकता हुआ। जिस तरीके से मैंने कहा था अर्ली गेम पे ऐसा ही फाइट हुआ तो आईजीएन की तरफ ज्यादा झुकेगा।
जी बिल्कुल, जो फाइट कैपेबिलिटी है आइजन की तरफ बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, क्योंकि उनके पास क्लॉट को कैंसिल करने के लिए कोई भी हीरो नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग रिप्ले का एक वापस से देखेंगे तो यहाँ पे जो एओजी आया था उसके बावजूद भी लैंसलॉर्ड सक्षम रहे थे अब ये टर्टल निकालने के लिए, बट जो वापस से जो टीम फाइट यहाँ पे यूटिलाइज हुआ था ब्लेजिंग डुएट के चलते, यहाँ पे लैंसलॉर्ड बिल्कुल निकल नहीं पाए और मेरियो ने वो किल आराम से निकाल लिया था। तो इसी के चलते जो लीड है वो दोनों ही टीम की तरफ था, पर अभी आइजन की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पे बॉट लाइन पे पुश करने का जरूर कोशिश करेंगे, पर रिस्पेक्ट थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे थोड़ा लेंगे, पर बच जरूर जाएंगे। बॉट लाइन पे अगर देखेंगे तो 1v1 ऐसा काइल को वहाँ पे फोर्स करेंगे रिकॉल करने के लिए, तो शायद से ये टर्रेट निकल सकता है, पर नहीं, रोटेशन जरूर आएगा। यामा स्पोर्ट्स चाहेंगे नहीं कि ये टर्रेट वो गवाए। जी बिल्कुल, अर्ली गेम पे टर्रेट गवाना बहुत ही जो है मतलब सिचुएशन खराब हो सकता है कोई भी टीम के लिए। तो टर्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्ली गेम के, एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको जो टर्रेट को सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे, लेकिन मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टर्रेट को अभी डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है शिंगोदा, वरना क्या है कि टर्टल जितना जाता जाएगा मिनियन का वेव का प्रेशर उतना बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पे हिल्दा को मौका ही नहीं मिल रहा है। जैसे हिल्दा जा रही है फिर से यहाँ पे सीसी देखिए आके फिर से मिनियंस को क्लियर कर रही है, तो कहीं ना कहीं सीसी एक हीरो को जो है खुद के साथ जो है मतलब होता है ना फेविक्विक का जोर ऐसे बना कर रख रहे कि आप कहीं पे मैं जाने दूंगा नहीं, तुम जाने की कोशिश करोगे मैं फिर से तुम्हें बुला के लाऊंगा पास। यहाँ पे मॉस्को पे देखिए सुनामी स्लैम को शायद हमें मौका देखने को मिलेगा। घाटो कच्चा का प्रयोग हो चुका है, इससे केलिया को यहाँ पे जो शायद दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उनको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर से ब्लेजिंग ब्लेड का यूज हो चुका है। मॉस्को थोड़ा सा हेल्थ की वजह से पीछे जाने में सक्षम हो जाएगा। फर्सा का प्लेयर स्ट्राइक यहाँ पे मौत की मौका देगा, इनका स्ट्राइक लगा, लेकिन फर्सा यहाँ पे स्ट्राइक का जो डैमेज था वो ज्यादा उनपे जो है लगा। किस तरीके से जो अभी डोमिनेट कर रहे हैं फार्सा, जो फार्सा लिया जाता है अर्ली गेम पे वो चीज अलग होता है। इसका टर्टल पे फोकस किया जाए, टर्टल दोनों टीम जो फाइट ले रहे हैं, टर्टल का हेल्थ कम है, लेंसफोर्ड के पास मौका है जी बिल्कुल, लेंसफोर्ड पे टर्टल लेके जाएंगे, टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेडरिन, लेकिन हो नहीं पाया। तो फार्सा का हेल्थ कम होने से उनको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। हिल तक कुछ ज्यादा ही पुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीसी का डैमेज की वजह से उनको भी पीछे की तरफ जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वरना उनको मौत के सामना जो यहाँ पे करना पड़ेगा शिनुदा। जी बिल्कुल, वहाँ पे अर्ली एओजी के इस्तेमाल के चलते वहाँ पे टर्टल के लिए एओजी नहीं था और उनके मेंबर भी नहीं थे, तो 4v5 सिचुएशन था। इसी के चलते आइजिन को बहुत ही आसानी से टर्टल मिला, बट जो फाइट था वहाँ पे रिवेरियन हम लोगों ने देखा कि वो पीछे जाके विच को बिल्कुल जोन आउट कर चुके थे। थोड़े के लिए उनको किल भी नहीं मिला। अगर वो एसओडी कनेक्ट होता मॉस्कोव का स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन तो शायद से यहाँ पे विच भी निकाल जाते, पर जो एडवांटेज यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स को मिला है वो 2 टरेट के मतलब बेनिफिट से मिला। अगर देखेंगे तो टॉप एंड मिड लेन का दोनों ही टरेट निकाला जा चुका है। बॉट लेन का थोड़ा सा एचपी बाकी है, शायद से जल्द निकल भी जाए। पर ऑब्जेक्टिव वाइज अगर बात करें तो 2 टर्टल आइजिन को जरूर मिला था, पर यामा स्पोर्ट्स को 1 मिला है। पर जो टरेट्स है वो जरूर यामा स्पोर्ट्स की तरफ है। बॉट लेन पे अगर देखेंगे तो वापस शायद एक और फाइट हो रहा है। यहाँ पे मॉस्को अकेले नहीं थे, वहाँ पे क्रैंक थे, पर जो एचपी बार ऑलरेडी रो चुका है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। पर यहाँ पे जो रोटेशन आ रहा है टीम यामा स्पोर्ट्स की तरफ, प्रेसेस रैद इंपीरियल x2 एचपी शायद से निकलना चाहेंगे, उनको रिस्पेक्ट वो किल जरूर निकालेंगे, पर वो भी मौत के घाट उनको भी निकाला जाएगा। पर यहाँ पे शायद से और किल्स ना मिले टीम यामा स्पोर्ट्स को, अगर सुनामी स्लैम के इस्तेमाल से इस सब किले को वापस लेके जाएंगे। डैमेज बहुत ज्यादा पर नहीं, साउजन यहाँ पे शट डाउन होंगे। कर्टन कॉल का इस्तेमाल जरूर होगा, पर डैमेज ज्यादा नहीं, उन पे डैमेज इनफ नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। पर 3-4-1 ट्रेड बिल्कुल इस बार यामा स्पोर्ट्स की तरफ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले देखने को मिला। कोई किसी को छोड़ के बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हाइपर अगर मर रहे तो हाइपर रिटर्न में जो है, जैसे यहाँ पे मॉस्को जो एमएम जो है यामा स्पोर्ट्स का, उनको भी बाहर निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं गेम प्ले जो अभी फिलहाल 5-6 की जो है यहाँ पे आ चुका है। गोल्ड लीड उतना कुछ खास है नहीं, वो आप बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट और अभी मुकाबला यामा स्पोर्ट्स दिखा रहा है, मैं इसी का बात कर रहा था कि मौका कभी भी किसी के पास आ सकते हैं। तो फाइट को देखिए, मॉस्को प्लेयर बहुत ही कम था, मॉस्को फिनिश करने की कोशिश करे तो उनको पीछे की तरफ जाना था, स्पेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज किया। लेकिन यहाँ पे देखिए फेडरिन ने किस तरीके से रिस्क लिया कि बोला मैं मरूंगा तो तुझे मार के ही मरूंगा। यहाँ पे फेडरिन फंस चुके थे ट्रैट में, लेकिन मॉस्को का फार्म और उनका फार्म दोनों रिलेट हुआ। यहाँ पे लॉर्ड के जो शिक्षण हो गए आराधना जो है फिर से शुरू कर लिया गया शिलुदा। यहाँ पे लॉर्ड मॉस्को ने यहाँ पे सेकंड्स के यूज जरूर कर लिया, वो बचा कर तो शायद लॉर्ड में एडवांटेज होता, लेकिन वैक्सना फंस चुके हैं। यहाँ पे फार्सा ने जो है यहाँ पे वैक्सना का किल निकालेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ बहुत ही ज्यादा लो होने की वजह से उनको पीछे की तरफ जाना काटोगे। अपने एओजी जो मारा सेम जगह पे मारा, जहाँ पे कोई हीरोज नहीं था, मिस करने की वजह से उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा। फार्सा का फेदर स्ट्राइक फिर से आया। यहाँ पे जिस तरीके से टीम फाइट चल रहा है, फिर से जो है आईजीएन आगे जा रहे हैं। यहाँ पे लॉर्ड जो है उनके पास रहने की बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे लैंडशॉट हो तो है, लेकिन वहाँ पे उनको जाना बहुत ही जो है रिस्क, अभी यहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो वो जाएंगे, लेकिन मौत के सामना भी शायद हमें करने को जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बचने का कोशिश भरपूर है, पर नहीं, मौत
के घाट मृत्यु दंड यहाँ पे मिलेगा। मॉस्को कोशिश जरूर कर रहे थे बॉटलिन से पुश करने का, अगर वो टीम फाइट पे ज्वाइन करते शायद से ये टीम फाइट कुछ और ही होता, पर विच का जो पोजीशनिंग है इस गेम पे काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छा टीम को सपोर्ट कर रही है, जो डैमेज नेसेसरी है टीम फाइट पे वो जरूर मिल रहा है यहाँ पे टीम आईजीएन को, और इसी के चलते यामा स्पोर्ट्स का जो लीड था वो अभी फिलहाल वो गवाएंगे। यहाँ पे मिड लेन पे एक और फाइट का शुरुआत, जाउजन वापस लेके आएंगे नेको क्वीन को और यहाँ पे विश जरूर निकालेंगे, पर जो मृत्यु दंड यहाँ पे रिस्पेक्ट को मिलेगा उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं रहेगा वहां पे, थोड़ा दूर थे उनके टीममेट्स, तो इसी के चलते 1-for-1 ट्रेड फिर से एक बार, बट जो टर्रेट्स निकल रहे हैं टीम यामा स्पोर्ट्स के टॉप लेन पे उनके तरफ उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बॉट लेन से लॉर्ड भी मार्च कर रहा है, तो शायद से कुछ यहाँ पे एडवांटेज मिले, पर टॉप लेन पे अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेरियो यहाँ पे 2v1 कर रहे हैं, शायद से एक ले जा पाएंगे नहीं, वो रिवाइटलाइज क्रैंक के द्वारा बचा लेंगे यहाँ पे उनके अपने एमएम को वो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया मीडियो ने, वो भले मौत के घाट उनको उतरा गया लेकिन उन्होंने सीधा 3 हीरो को बिजी रखा, उसकी वजह से जो टर्रेट एडवांटेज मिला आईजीएन को वो काबिल तारीफ था। शिंदूदा भी एक गेम प्ले ऐसा हो रहा है यहाँ पे, इतने सारे माइक्रो जो है गेम प्ले हमें देखने को मिले एक प्लेयर की तरफ से, जो उनको पता है एग्जैक्टली मैं मरूंगा कोई बात नहीं, इतना ज्यादा एंगेज रखूंगा कि आपको मौका नहीं दूंगा कि आप जाके किसी और लेन पे जाके खुद का लेन जो टर्रेट है उसको बचा सको। यहाँ पे देखिए लॉर्ड फाइट में मैंने बोला था कि यहाँ पे जाएंगे तो मौत का सामना करना पड़ेगा, लैंसलॉर्ड गए थे लॉर्ड के सामने और दोनों जो है मौत के सामना करना पड़ा, वो ज्यादा ही रिस्क ले रहे थे। इससे अच्छा अगर आप सेफ खेलते तो क्या पता आप जो अपना सही जो है टर्रेट है वो बचा लेते। इसका फर्स्ट हाफ देखने को मिला, फेडरिन जो है मौत की घाट उनको उतरा जाएगा, 3 लीड से अभी भी किल के आगे है यहाँ पे आईजीएन। गोल्ड लीड हमारा जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मैच में गोल्ड लीड हमें 11 मिनट के बाद भी सेम देखने को मिल रहा है शिंदूदा। जी बिल्कुल, पर एक चीज पे जो हम लोग को देखना पड़ेगा वो है मॉस्को का फार्म, वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, वो लेवल 14 है एट दिस पॉइंट, और शायद से बहुत ही ज्यादा आइटम अभी मैंने देखा उन्होंने विंड ऑफ नेचर लॉक किया, तो शायद से जो नेक्स्ट टीम फाइट पे होगा अगर एरन द क्रिएटर अंदर आएंगे भी तब भी उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर यहाँ पे एक और सुनामी स्लैम टॉप लेन पे टर्रेट के अंदर लेके जाएंगे वो रिवेरे को, पर यहाँ पे काउंटर एंगेज एओजी का इस्तेमाल 2 मेंबर पे, विश शायद से इस बार बच नहीं पाएंगे, फ्लिकर का इस्तेमाल जरूर करेंगे वो, पर नहीं, इंपीरियल एक्सट्रा ने कहा कि नहीं इस बार मैं आपको निकाल के जाऊंगा, एसओडी इस बार अवेलेबल है पर वो अंदर जाना नहीं चाहेंगे। जाउजन का एचपी थोड़ा सा लो था, पर इसी के चलते एक डिसएंगेज पर जो शट डाउन चाहिए था विच के ऊपर वो जरूर मिलेगा, पर जो फार्म में कह रहा था यहाँ पे एक इंपीरियल एक्स2 के पास जो मॉस्को के पास है यहाँ पे वो थोड़ा सा ज्यादा ही है, और ये शायद से एक मुश्किल यहाँ पे शायद से एक गेम चेंजिंग क्राइटेरिया जो था वो कवर कर सकता है टीम यामा स्पोर्ट्स के लिए, और शायद से आईजीएन ने ये चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज जरूर किया है। जी बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा था कि मॉस्को को अगर प्रॉपर फार्मिंग मिलता है तो लेट गेम में आप याद रखिएगा कि लेट गेम में मॉस्को के पास चांस है गेम को जिताने का, लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है कि उनको सेफ खेलना और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलती करी और गेम पलटी, ये चांस हमें देखने को मिल सकता है। टीम फाइट में देखना किस तरीके से मॉस्को ने एंगेज किया, किल के पीछे नहीं भागा, किल जरूर लिया लेकिन फोकस ये रहा था कि मुझे भी बचना है, ज्यादा एंगेज नहीं करना ताकि मुझे भी जो यहाँ पे रिस्क मिल जाए। इसके बाद लॉर्ड जो यहाँ पे आ चुका है, जो यहाँ पे फिर से जो है लॉर्ड की आराधना शुरू किया जा चुका है। इस बार मुझे लगता है मुश्किल होगा शायद आईजीएन के लिए लॉर्ड लेना, सब लोग आएंगे जरूर लेकिन बचेगा नहीं लॉर्ड के पास हेल्थ, यहाँ पे लॉर्ड को लेके जाएंगे, यहाँ पे हिल द फोकस जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी उनको पीछे की तरफ जाना चाहिए। अगर अभी यहाँ पे एंगेज करते हैं उनका जो यहाँ पे मौत होता है जो यामा स्पोर्ट्स के 1-2 प्लेयर का, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। देखिए सुनामी स्लैम का जो थोड़ा बहुत चांसेस हमें देखने को मिल रहा है, बैक्सन यहाँ पे फ्लिकर मार कर जाएंगे, अपना जो है 2 छोटा लॉर्ड जो है उनको यहाँ पे फेंकेंगे जो एटर्नल है, तो क्योंकि लेकिन मेरे हिसाब से फ्लिकर अब यूज करना सही नहीं था वैक्सन के लिए। उनको अभी लॉर्ड आएगा, लॉर्ड के साथ जब टर्रेट के अंदर जाएंगे वहां पे अगर वो एडवांटेज लेते फ्लिकर का तो कहने कि उनको ज्यादा फायदा होता है, या तो एस्केप में या तो एंगेज में। वो ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं अभी राइट नाउ, तो उनको थोड़ा सा सेफ करना चाहिए, उनके पास मोबिलिटी ही नहीं है, तो पकड़े जाएंगे तो बचेंगे नहीं। जी, और ये इन्फॉर्मेशन जरूर रहेगा टीम आईजीएन की तरफ, तो नेक्स्ट टीम फाइट पे वो लोग कोशिश करेंगे इस नेको क्वीन को जो एक्साना पे है उनको मार्क करने का, पर यहाँ पे लॉर्ड मिड लेन से जरूर जा रहा है, मिड टर्रेट को वो हिट करेंगे, वीव्स भी अच्छा खासा सिंक है, मॉस्को कोशिश करे टॉप लेन का निकालने के लिए, पर यहाँ पे टॉप लेन पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे प्यूरीफाई से बच जाएंगे इंपीरियल एक्स2, फारसा ने भी फेदर एयर स्ट्राइक इस्तेमाल कर चुके हैं, सब कल थोड़ा ज्यादा अंदर थे, यहाँ पे इम्यून जरूर करेंगे वो टॉन्ट को, फिर वापस से टॉन्ट होंगे पर बच जरूर जाएंगे। यहाँ पे लॉर्ड का एच भी थोड़ा सा है पर मिनियन ज्यादा नहीं है, एओजी का इस्तेमाल पर किसी पे कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा डैमेज लेते हुए शायद से पे गिरेंगे, पर टीम फाइट का अगर तरफ देखेंगे तो वो जोन आउट हो चुके, बेस वाइड ओपन है यहाँ पे, और मॉस्को एक भी मोमेंट का इंतजार नहीं करेंगे और गेम को यहाँ पे खत्म करेंगे। यामा स्पोर्ट्स का पहला पॉइंट इस बेस्ट ऑफ 5 सीरीज का। जी शिंदूदा, जिस तरीके से गेम प्ले किया, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे मोवा 5 में कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, स्किल्स जो है बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। मॉस्को पे उन्होंने फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं मॉस्को को जो फार्म मिला
उसकी वजह से जिस तरीके से उन्होंने गेम को निकाल के ले गए, क्योंकि मॉस्को भी एक ऐसा ही होता जो गेम को अगर पोजीशनिंग सही होता तो गेम को जिता पाएंगे, जो मैंने कहा था ये देखिए यही इन द एंड ऑफ द डे हुआ। तो कहीं ना कहीं यामा स्पोर्ट्स के पास अभी भी मौका है, जो मैच को है 2-2 करके फाइनल तक हमें जो BO5 का जो 5वां मैच है वो भी हमें देखने का मौका मिले। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मैंने कहा था कि वो लेट गेम पे जो मॉस्को को उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा था। मतलब मॉस्को को एक बिल्कुल छोड़ दिया गया था, वहाँ पे उनको फ्री फार्म करने को मिला और ये चीज़ आप नहीं करना चाहेंगे टीम पे बिकॉज़ आपके पास ज़रूर क्लॉड है, आपके पास ज़रूर फारसा है, पर अगर एक बार मॉस्को को अच्छा एक पोज़ीशन मिल गया टीम फाइट पे अंदर आने का, तो वहाँ पे आराम से वाइप आउट कर सकते हो क्योंकि उनके डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों ने बात किया था कि अर्ली गेम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जो रेंज कम होता है मॉस्को का, वो ज़रूर एक दिक्कत हो सकती है, पर जो लेट गेम का जो मॉन्स्टर बनता है ये मॉस्को, वो ज़रूर इस गेम पे हमें देखने को मिला यहाँ पे जी बिल्कुल भैया। जी बिल्कुल, नीरज चोपड़ा का भाला जब तक चुभता है चुभता रहता है, और उनको अगर मात नहीं देगा तो उनका भाला इतना चुभेगा, आपको मौका मिलेगा कि दूसरे मैच में खेलने का, उनको हराने का। उस मैच में तो मौका बहुत ही कम मिलेगा, वही हमें यहाँ पे देखने को मिला। जी, बिल्कुल और इसी के साथ हम लोग चौथे गेम की तरफ बढ़ेंगे। लग नहीं रहा था चौथा गेम आएगा, पर इस वक़्त 4th गेम यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स ज़रूर कोशिश कर रहे हैं रिवर्स स्वीप का। यहाँ पे शायद से उन लोगों ने कहा कि अच्छा, मस्ती-मज़ाक बहुत हो चुकी है बॉयज़, अब वापस से गेम को अभी वापस वक़्त आ गया इस गेम को जीतने का। तो देखते हैं यामा स्पोर्ट्स का ये जो अग्रेशन, ये जो अलग-सा वार है, जो हमें देखने को मिला 3rd गेम पे, क्या आईजीन उसको बंद कर सकते हैं या फिर वो नाकाम रहेंगे इस कोशिश पे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आई थिंक आईजीएन अभी भी अगर एक मैच जीत जाते हैं तो यामा स्पोर्ट्स का कोई चांस नहीं है, राइट? वो लोग ऑलरेडी 2 जीत चुके हैं। अभी अगर जी। यामा स्पोर्ट्स जीतते तो जाके हमें BO5 देखने की मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यामा स्पोर्ट्स के ऊपर प्रेशर अभी भी बना हुआ है, तो अभी उनको बहुत ही ज्यादा सेफ खेलना पड़ेगा। मुझे इस बात का डर है कि मॉस्को का गेम प्ले देख के यहाँ पे मॉस्को को ना बैन कर दे। मेरे को लगा था कि हिल्डा के कंपेयर में मॉस्को को पहले बैन करेगी, क्योंकि अगर इतना ज्यादा कॉम्फर्ट पिक उनका मॉस्को पे है तो आपको मॉस्को को गेम से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 मैच खेल चुके हो, तो आपको पता है उनका सबसे बेस्ट पिक क्या है, और उसमें से जो सबसे अच्छा खेलता है उसको बाहर निकाल दो, तो आपके पास एडवांटेज ज्यादा रहेगा। जी, बिल्कुल और मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे हिल्डा बैन ज़रूर नहीं करना चाहिए था, पर मॉस्को बैन भी इस बार टीम आइजिन की तरफ से आता हुआ, तो रिस्पेक्ट ज़रूर देंगे यहाँ पे इंपीरियल एक्स 2 का और आई मीन वर्थ इट है यहाँ पे। मैं कहूँगा कि ये बैन शायद से एक वेस्ट बैन नहीं रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, पर ये कुछ ज़्यादा फोकस हो गया एक हीरो की तरफ। यहाँ पे 2 हीरो जो टारगेट बैन हुआ, इसी के चलते बहुत सारे मेटा हीरोज़ या फिर बहुत सारे हीरोज़ जो बैन सेक्शन पे होने चाहिए थे, वो शायद से खुले रहेंगे इस गेम पे। जी बिल्कुल, और मैं बोलते बोलते यहाँ पे मॉस्को हमें बैन देखने को मिला, और इसके साथ यामा स्पोर्ट्स की तरफ से जो है देखिए यहाँ पे ग्रेंजर बैन देखने को मिल रहा है, तो शायद इसके साथ बैक्सिया जो है वो भी बैन होंगे। इवानस बैन होने की चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। जो बैन्स अभी होंगे ऑलमोस्ट कॉमन बैन्स होने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इसको ज्यादा बैन्स के ऑप्शन बचे नहीं है। यहाँ पे कोई भी टीम लापू लापू या यूजन को प्रायोरिटाइज कर नहीं रहे, तो यहाँ पे वो बैन हमें देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे हैरित हो गया, यहाँ पे पहले बैन हुए थे, फिर यहाँ पे ग्रेंजर बैक्सिया, फिर यहाँ पे हो गया यहाँ पे यूरेनस, उस टाइप के बैन ही हमें देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ का थोड़ा-सा मुझे आश्चर्य ज़रूर हुआ यहाँ पे, एंजर बैन वो इम्पोर्टेंट था इस बार तो क्या पार्सा को प्लस में यहाँ पे नहीं रहेगा कि यामा स्पोर्ट्स में, क्योंकि विच का जो पोजीशन था वो ज़रूर डिसरप्ट करने वाला वहाँ पे रिवेरिया था, वो फील्डर यूज़ इस्तेमाल करते। ये चीज़ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ था पार्सा का पोजीशन की वजह से। तो हाँ, पार्सा को वापस देना सही रहेगा यहाँ पे, पर उनका जो फर्स्ट पिक रहेगा यहाँ पे हाइजीन का, वो रहेगा यूएनएस। तो एक मेटा हीरो जो लाता है इस गेम पे, वो ज़रूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे इवेंट पिक बहुत जरूर हुआ है, लेकिन इसके साथ आप ये भी देखिए कि यहाँ पे कैरी उठाने के चांसेस बहुत ज्यादा है एमआई स्पोर्ट्स के पास। अगर मेल्ट करना है यहाँ पे अल्फा उठा सकते हैं, यहाँ पे एक्सबॉग उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वो जाएंगे फिर से अपना जाए कंफर्ट पिक की तरफ, जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट है लैंसलॉट और गाटो के ऊपर बहुत ही ज्यादा। तो फर्स्ट 2 पिक पे हमें वो देखने को मिला। तो अब आईजीएन के पास बहुत ही ज्यादा मौका है कि कुछ फारसा जैसे हीरो उठाने का, इसके बाद केलिया उठाने का, क्योंकि अभी भी ये सब हीरो ओपन है। जी, बिल्कुल, अभी भी ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं टीम आइजिन की तरफ। लास्ट गेम में भी हम लोगों ने देखा था कि क्या आया था, फार्सा के साथ जो कॉम्बो हुआ था, वो अभी भी एक ऑप्शन है आईजीन के लिए। क्या वो लोग इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सेम पिक्स यामा स्पोर्ट्स की तरफ, तो लास्ट गेम पे भी हमें देखने को मिला था। बटुट काशा, लैंसलॉट अच्छा हीरो थे, पर सेम था, बट वो फर्स्ट ट्राई के थोड़े हीरो, क्योंकि मैं पता है यूरेनस कितना डैमेज सोक कर सकते हैं, और लैंसलॉट शेड हीरो नहीं है, वो फर्स्ट हीरो है। कुछ टारगेट को काम करने में आसानी होती है यहाँ पे, पर एक वापस से दोनों स्ट्रॉन्ग हीरो
भाई ऐसे जो है ये सोचिए और किमी आएंगे यहाँ पे, किमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं लड़ने पे, बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, क्योंकि उनका जो वो डैमेज है उससे लाइक टैंक की हीरोज की तरह सोच नहीं कर सकते, और देखते ही देखते आपका एचपी बहुत ही जल्दी लो हो जाता है। जी बिल्कुल, इसका देखिए यहाँ पे केलिया जो है उनको पिक कर लिया गया है, यामा स्पोर्ट्स जो यहाँ पे मौका नहीं छोड़ रहे, जितने सा हेलो और सिंधु, देखते हैं यहाँ पे। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे जय भैया। तो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फारसा जो है, यहाँ पे फारसा को बैन कर दिया गया, इसके बाद हैरिक जो है उनको भी बैन कर दिया गया शिंदू तक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फारसा जो है, जो अपना पहला स्ट्राइक यूज करते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने की मौका बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा अच्छा डिसीजन आइजन की तरफ से, अगर आप खुद को नहीं मिलता तो आप एनिमी को भी मौका मत दो कोई ऐसा हीरो लेने का जिससे आप गेम डोमिनेट कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा डिसीजन इनकी तरफ से रहा। तो आखिरी बैन जो दो बचे वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि दोनों टीम क्या सोचती है कि कौन सा हीरो बैन करना चाहिए, रेस्पेक्ट बैन या काउंटर बैन। इसका रूबी जो है यामा स्पोर्ट्स ने यहाँ पे रूबी को बैन किया, इस तरफ से आइजन की तरफ से केडी बैन हुआ, जो मैं बोलता केडी लेने की बहुत ज्यादा चांसेस है। यामा स्पोर्ट्स ने केडी नहीं केलिया उठाया। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे केडी बैन बहुत ही अच्छा खासा रहेगा कि यूरेनस को सस्टेन करने के लिए जो है केडी का ट्रू डैमेज लगेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आइजन की तरफ से ये बैन बहुत ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल बैन रहेगा। जी बिल्कुल। और बैंस की तरफ देखते हुए तो यहाँ पे सच्ची लग रहा है, यहाँ पे किमी को जो दिक्कत होता है वो रेंज किससे, तो वो रेंज भी बैन कर चुके हैं यहाँ पे आईजीएन। और इसके साथ मिड लेन पे क्या ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, कडीटा एक ऑप्शन है उनके लिए जरूर। और लास्ट गेम की तरफ अगर वो लोग चाहेंगे तो वेक्साना को भी वो पिक कर सकते हैं, पर आई डोंट नो यहाँ पे वेक्साना सही रहेगा नहीं, बट कडीटा जरूर यहाँ पे आता हुआ। जी क्या ही कहना, आपकी दिव्य दृष्टि का क्या ही कहना सिंधुदा, मतलब जो एक्सपीरियंस है आपका वो यहाँ पे दिखता है। आप बोलते नहीं हो हीरो एक नाम, वो हम यहाँ पे दर्शन हो जाता है कि वही हीरो जो उठा लिया जाता है। ऐसा लगता है कि आपका जो सोच है वो मतलब क्या ही लेवल का है। तो इसी का कैरिता उठाया गया तो मैं कहना चाहूंगा बहुत ही अच्छा पिक है यहाँ पे। गाटो कच्चा का वो जो एवजी लगेगा, उसके बाद केलिया अगर सिंगल हीरो को पिक करता है उसी पे अल्टीमेट यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं बस डैमेज के साथ जो है कीमी जैसा हीरो, जो स्क्विशी हीरो, उनको बचना जो है नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे खिले अगर कोशिश करेंगे पकड़ने की उनको, तो जरूर एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। पर जो एक और दिक्कत है उनके लिए वो है कि उनके पास मार्क करने वाले बहुत सारे हीरोज हैं, तो फिर ये जो कलेया है वो बिल्कुल जा रहा है मिड लेन की तरफ, और वैसे रोम पोजीशन पे। और यहाँ पे लापू लापू भी, ओ यहाँ पे एक्चुअली 2 EXP मतलब 2 फाइटर्स का इस्तेमाल करेंगे आईजीएन। और यहाँ पे मिड लेन पे हाइपर YSS मतलब मार्क्समैन हाइपर जो है वो मिड लेन पे रहेगा अलॉन्ग विद किमी, तो दो मार्क्समैन मिड लेन पे रहेंगे यहाँ पे। तो 2 फाइटर्स मेटा जो बहुत सालों पहले एक बात हुआ करती थी, एक मेटा हुआ करता था, वो वापस से देखने को मिलेगा आईजीएन की तरफ से। यामा स्पोर्ट्स यहाँ पे ट्रेडिशनल जो पिक होता है, अभी जो अभी नॉर्मलाइज्ड मेटा जो है, एक फाइटर और एक MM वही ड्राफ्ट से जाएंगे, और मिड लेन पे रहेगा उनका असासिन। तो जो फ्रंट लाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे आईजीएन की तरफ से जय भैया, बहुत ही ज्यादा टैंकी है। मैं वही तो सोच रहा था कि केरी का ऑप्शन था, उन्होंने केरी की जगह केलिया उठाया। के से दोनों ही हीरो है, लेकिन के में केलिया, केरी छोड़ के केलिया उठा लिया। तो कहीं ना कहीं जो अभी दिक्कत आ सकता है ट्रू डैमेज का, वो हमें यहाँ पे देखने को, क्योंकि उन्होंने अल्फा भी नहीं उठाया, उन्होंने एक्सबो भी नहीं उठाया, उन्होंने अपना कॉमन जो मतलब कॉन्फिडेंट पिक जो है वो यहाँ पे लिया गया है। तो किस तरीके से अगर डैमेज भी देंगे तो किस तरीके से आईजीएन का जो इतना सस्टेन है और मिड टू लेट गेम पे इतना ज्यादा टैंकी हो जाएगा, कैसे बचाएंगे? क्योंकि वाईएसएस का जो डैमेज वो आ जाएगा, क्योंकि वो एमएम है, उसको पाम मिला, उसके पास डैमेज आएगा, कीमी का भी डैमेज मैजिक में आएगा। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत हमें देखने को मिलेगा, तो वो संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है इस बार यामा स्पोर्ट्स के लिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ चौथा गेम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है आईजीएन बनाम यामा स्पोर्ट्स। अभी भी आईजीएन लीड जरूर कर रहे हैं, बट यामा स्पोर्ट्स 1 पॉइंट ले जाने में उनको वो बिल्कुल सक्षम रहेंगे। और मेटानिंजा ऐप गाइस जरूर डाउनलोड कीजिए। आपको पता है अभी तक हम लोगों ने काफी बार बोल चुके हैं, हम लोगों ने काफी बार बता चुके हैं आपको कि क्यों डाउनलोड करना चाहिए आपको, बट डाउनलोड जरूर कीजिए इसके बाद। और अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया स्ट्रीम को, वो जरूर करेंगे। बट टॉप लेन की तरफ अगर देखेंगे, यहाँ पे जो अर्ली गेम डैमेज है वो जरूर MM के पास थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेवल 1 पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे लापू लापू, तो थोड़ा सा लीन एडवांटेज रहेगा यहाँ पे मार्क्समैन के लिए। पर धीरे धीरे जब जो स्केलिंग होगा, जब वो आइटमाइजेशन आ जाएगा, तब शायद से इतना आसानी ना हो इस ब्रीट्रिक्स को। जी बिल्कुल, यहाँ पे बेट्रिक्स अगर अच्छा गेम प्ले दिखाए तो उनका जो है डैमेज जो लगता है भाई बचना मुश्किल होता है। बुश के अंदर से जो पुश होके गोली मारते हैं, और कोई भी स्क्विश हीरो को वन शॉट देता है अपने शॉटगन के थ्रू, वो बहुत ही डरावना होता है।
तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि पीक तो अच्छे लेकिन सस्टेन करेंगे तो भले ही, लेकिन डैमेज कहाँ से देंगे और डैमेज लेने वाले कौन रहेंगे, मुझे उस बात का थोड़ा सा टेंशन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वाइस के पास इम्यूनिटी जो उसका सेकंड स्किल पे, उसके जरिए वो बच सकते हैं इजीली। हाइलोस ने अगर स्टन भी किया या कादिर ने अपना स्किल यूज किया तो वो हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ लैंस लॉर्ड जो है हाइलोस पे पड़ चुके हैं भाई, हाइलोस यहाँ पे रिवेडस का यूज करेंगे लेकिन शायद बचना मुश्किल हो सकेगा क्योंकि 3 लोग जो यहाँ पे पकड़ चुके हैं। फास्ट ब्लड के लिए लेके जाएंगे, वो ऐसा आए जरूर है, अपना अल्टीमेट का यूज करेंगे लेकिन कुछ यहाँ पे शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब यूरेनस आके थोड़ा बहुत पोक को निकेश करेंगे कि भाई मुझे मारो, लेकिन कोई मारने में सक्षम नहीं रहेगा। लापो लापो इसका जो है डोमिनेट कर रहे हैं बेट्रिक्स को, बेट्रिक्स जो है यहाँ पे लापो लापो को डोमिनेट कर रहे हैं। मिड एक फाइट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, शायद मुश्किल हो सकता है बचना। फिर से यूरेनस का हेल्थ बहुत ही कम है, लैंस लॉर्ड जाएंगे की तरफ और इनको फिर से जो है मौत की एक मौका दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से अभी गेम जो है डोमिनेट होते हुए देख रहा है, वो काफी सरप्राइजिंग है। जी बिल्कुल, जितना भी सस्टेन कर सकते हैं वो लोग, पर उनको आइटम्स का बहुत ही ज्यादा जरूरत होगा। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से फाइट को वापस देखेंगे, रीप्ले देखेंगे यहाँ पे, पहले वो लोग जरूर 1000 पे एंगेज किए हैं यहाँ पे, उन्होंने रिवाइटलाइज का भी इस्तेमाल किया था, पर पेट्रीफाइज जितना भी सब कुछ था सब कुछ थ्रो करने की वजह से वो बच नहीं पाएंगे। पर जो फाइट वहां से और भी नीचे गया, जो यूरेनस भी आके ज्वाइन किया उनको भी निकाला जाएगा, तो उसी के चलते बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ यहाँ पे। और जो टर्टल भी है शायद से यहाँ पे हाई टीम यामा स्पोर्ट्स लेके गए, तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज, ऑलमोस्ट 1200 का गोल लीड है अभी जस्ट 3 मिनट के अंदर, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे नेको क्वीन कोशिश जरूर कर रहे बचने के लिए, नॉकअप मिलेगा यहाँ पे 1000 पर, वो अभी तक उनको लेवल 4 नहीं मिला है। यहाँ पे हमें लेवल 4 है उनके पास, पर उनके पास अल्टी अवेलेबल नहीं है, अभी अल्टी आ भी जाएगा। पर यहाँ पे जो पकड़ेंगे यहाँ पे 1000 को वापस से मौत के घाट, उनको एक और बार उतारा जाएगा। तो इसके चलते आईजीन का थोड़ा ज्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे नॉकअप का जरूर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आयरन द क्रिएटर के ऊपर, पर कनेक्ट नहीं होगा। पर जो फाइट और गोल लीड जो है वो जरूर और बढ़ता हुआ यामा स्पोर्ट्स की तरफ। जी बिल्कुल, यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स जिस तरीके से अपना जो गेमिंग स्पीड दिखा रहा है वो देखने जो काबिल तारीफ है। क्योंकि आप देखिए हीरो यहाँ पे टैंकी जरूर है लेकिन अर्ली गेम पे टैंकी का भी काम आता नहीं है। जो बस डैमेज दे रहे, जिस तरीके से यहाँ पे डैमेज दे दे के टैंक को मेल्ट कर रहे, अगर आइटम प्रॉपर टैंक का बन नहीं पाया था और इस तरीके से यामा स्पोर्ट्स गेम दिखाते हैं तो शायद गेम जो है यहाँ से फिर से निकालने ले जाने में सक्षम रह जाएंगे यामा स्पोर्ट्स। पर कहना कि आईजीएन को जो है थोड़ा सेफ खेल के अपना आइटम जो है बहुत जल्दी जो है काउंटर आइटम बनाना जरूरी पड़ेगा, वरना दिक्कत हमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो बाबू भैया दिक्कत और आगे जाने वाला है आईजीएन के लिए। जी बिल्कुल, उनका जो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल अर्ली गेम के लिए नहीं है, उनका स्कीलिंग बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और जो अर्ली गेम एडवांटेज है वो जरूर रहेगा टीम यामा स्पोर्ट्स की तरफ। पर यहाँ पे ये सब कल शायद से यहाँ पे डैशेस का अच्छा खासा इस्तेमाल, एओजी भी यहाँ पे आएगा, कनेक्ट होंगे यहाँ पे 1000 पर, जो बहुत ज्यादा डैमेज गिर रहा है यहाँ पे, शायद रिवाइटलाइज भी ना बचा पाए। बहुत ही अच्छा सस्टेन यहाँ पे, पर आखिरकार उनको निकाला जाएगा। पर 1-for-1 ट्रेड यहाँ पे बैकलाइन पे देखेंगे, इंपीरियल एक्स को फ्लिकर फोर्स करने पे मजबूर करेंगे एरन द क्रिएटर, पर उनको भी निकाला जाएगा। 2-for-1 ट्रेड पर 2-for-2 ट्रेड क्रैंक भी मौत के घाट निकाला जाएंगे, फ्लिकर भी बचा नहीं पाएंगे। यहाँ पे टर्टल का वापस से घाटन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। रिस्पेक्ट जरूर कोशिश करे पड़े, सब कल वापस आएंगे। मेरी अभी भी जिंदा है, 3-for-3 दोनों ही टीम के लिए भी है, पर 2 और मेंबर्स यहाँ पे आईजीन का पहले जुड़ेंगे और आस्ते आस्ते रोटेशन जरूर आएगा। सब कल अंदर जाने की कोशिश करे, पर एट्रीब्यूशन का भी इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे सही से, क्योंकि विच टर्टल को निकालेंगे वापस से। एक और फाइट का जरूर होगा, अच्छा खासा फ्लैंक मिरियो को नेको क्वीन को जाने में, वहां पर बाहर जाने के लिए रोक रहे वो। नॉकअप का इस्तेमाल, शायद से यहाँ पे रिवेरा बच भी जाए। जी बिल्कुल, सस्टेन अच्छा खासा है, पर जो जंगल अभी इन्वेड होगा वो अच्छा खासा गोल्ड और लेवल एक्सपीरियंस जो है वो जरूर देगा। और टॉप लेन शायद एक टरेट भी निकाल पाएंगे यहाँ पे आईजीएन। जी बिल्कुल, टरेट जो यहाँ पे खत्म होने में देखने को मिलेगा, टरेट जो यहाँ पे जा चुका है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे जो है यामा स्पोर्ट्स कोशिश करेंगे कि बॉट लेन पे कोई है नहीं, तो ये काफी अच्छा खासा डिसीजन यहाँ पे कि लैंस लॉर्ड अगर फोकस करते हैं बॉट लेन पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे बॉट लेन पे टरेट जा सकते हैं। इसके बाद किमी फंस चुके थे लेकिन जाएंगे इसके लिए, तो यहाँ पे केलिया ने सुनामी स्लैम का यूज कर चुका है। टीम पर फिर से देखने को मिला यहाँ पे कादिता ने जो वायरस को बाहर निकाला गेम से, लापू लापू का बदला लेते हुए केलिया को गेम से बाहर निकालेंगे। लापू लापू का जो सस्टेन है जो आने लगा है भाई, अगर ऐसे गेम चलता रहा तो मिड टू लेट गेम में लापू लापू और यूरेनस जो सस्टेन करने वाले हैं, हाइलोस का तो बात ही अलग है, जो मैजिक डैमेज पर ज्यादा सस्टेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं यामा स्पोर्ट्स को दिक्कत हो सकता है। तो इसी तरीके से प्रेशर बनाकर रखेंगे तो कहीं ना कहीं गेम जो है वो यामा स्पोर्ट्स अभी भी आगे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, एक और बार अगर रीप्ले देखेंगे यहाँ पे तो अच्छा खासा फाइट था यहाँ पे, पर देखते ही देखते डबल किल भी मिला यहाँ पे ये सब खेली को, पर जो रिस्पेक्ट का डैमेज था वहां से एक और किल निकालने में उनको सक्षम होंगे। तो टर्टल भी यहाँ पे आईजीएन की तरफ, तो जो गोल लीड था अभी भी बरकरार है,
टीम यामा स्पोर्ट्स की तरफ पर एक और फाइट यहाँ पे यूरेनस के ऊपर गैंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो वो से एक डिस्ट्रैक्शन था, जो टर्रेट जो मेन टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था, वहाँ पे बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ पे आरएन द क्रिएटर बॉटलाइन पे सेम चीज का कोशिश, पर एसएफ खेली यहाँ पे डिफेंड करने के लिए मौजूद रहेंगे, पर टॉप लाइन पे अगर फिर से एक बार देखेंगे, नजर रखेंगे यहाँ पे, वहाँ पे ग्लोरियस पाथवे का इस्तेमाल, लॉकअप यहाँ पे होगा, वहाँ पे सुनामी स्लैम वापस लेके आएंगे यहाँ पे जाउजन को, और वो बच नहीं पाएंगे। रिवेरा सस्टेन जरूर कर रहे हैं, पर जो डैमेज और एचपी बार जो लो है, डैमेज इनफ नहीं होगा, शायद से यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे, पर यहाँ पे स्नाइप अच्छा खासा, विच का एचपी लो होते हुए मिड लेन की तरफ देखेंगे तो इस खैर यहाँ पे 1v1 जरूर कर रहे थे, मिड लेन को कोशिश करने का कोशिश था, पर रोटेशन एरन द क्रिएटर को उनको रोकेंगे यहाँ पे। मेरियो वापस से टर्टल की तरफ, पर यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स शायद से ये टर्टल आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि जो जंगल है आईजीएन की तरफ से वो बहुत ही दूर है। जी बिल्कुल, बट टर्टल तो निकालने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन टीम फाइट जिस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, यामा स्पोर्ट्स जिस तरह से यहाँ पे किल गेन कर रहे हैं, वो कहने की काफी सरप्राइजिंग है। पीछे की तरफ जाना पड़ेगा यामा स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनका हेल्थ काफी लो है। गाटो कचा आएंगे, सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, एओजी का यूज जो है हमें देखने को मिला है, लेकिन इस बार सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लाखों उनका किल निकाल के जाएंगे, कल तक अल्टीमेट यूज हो चुका है, कल का हेल्थ कम है, इसका फायदा कल तक वाइसेस बाहर निकालेंगे। इसके साथ कईया जो है सुपर स्लैम का प्रयोग करेंगे, मरते जो है कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मार के जो है कुछ कर पाए, लेकिन उनका मौका मिला नहीं। तो अभी राइट नाउ आईजीएन जो है, जो लीड पे पहले यामा स्पोर्ट्स थे, उसको धीरे धीरे फिलहाल जो हमें पे देखने को मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गेम का जो पासा जो है पलटना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपने भी कहा था, मैंने भी कहा था, सस्टेन तो कर लेंगे, उस सस्टेन को डैमेज देने के लिए काफी ज्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उनको। जी बिल्कुल, अभी रेड बफ के यहाँ पे माना नहीं है सब खेली के पास यहाँ पे, तो फिर स्किल्स का इस्तेमाल जरूर नहीं कर पाएंगे, शायद यहाँ पे ज्यादा डीप चले गए मेरी। और जी बिल्कुल, जो अंदर ज्यादा जाएंगे उनको बाहर निकाला नहीं जाएगा यहाँ से, तो मौत के घाट एक और बार फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पे। जी 6 for 8 स्कोर है अभी फिलहाल, और जो गोल लीड है वो थोड़ा सा बरकरार है यामा स्पोर्ट्स की तरफ, पर ज्यादा देर नहीं रहेगा शायद से, क्योंकि जो फार्मिंग अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो रिस्पेक्ट अच्छा खासा फार्म करे। एक बार गिरे जरूर थे वो मौत के घाट, उनको भी गिराया गया था, पर जो उनका केडी अभी 3, 1 and 2, अगर वो अच्छा खासा स्केल हुए यहाँ पे तो शायद से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। पर एक और जो प्लेयर है जिनको हमें नजर पे रखना पड़ेगा वो है इंपीरियल X2, वो भी अच्छा खासा फार्म हो रहे हैं। और ये बीट्रिक्स, इनका डैमेज नीचे नहीं जाता, ये बस ऊपर जाता है, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो अगर उनको मार्क नहीं किया यहाँ पे अच्छा खासा, तो जो डैमेज कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे कब लग रहा है और कब एचपी बार गिर रहा है, वो जरूर आए जिनको पता भी ना चले। और यहाँ पे देखिए जो रिवर कंट्रोल है, यहाँ पे जोनिंग किया जा रहा है, कहना कहीं तो जोनिंग किया जा रहा है, मतलब एक फाइट की संभावना में देखना मिल सकता है। लेकिन इस फाइट का जो है कोई कोई वैसा इंटरेस्ट ना लेते हुए, कोई इच्छा ना लेते हुए वो लोग जा रहे हैं लेन पे पुश करने के लिए आए। आप ये देखना, यामा कोशिश कर रहा है फाइट लेने की, गैंकिंग और जोनिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फोकस किया जा रहा है आईजीएन की तरफ से कि लेन का जो मिनियंस है उनको क्लियर करो, फिर फाइट लो। और कहना कि डैमेज जो है वाइसेस को आते हुए देखने मिलेगा। कैलिया का यहाँ पे सुनामी स्लैम में कोई मौका मिल सकता है, रिगोलेस पर यूज हो चुका है, लेकिन कैलिया फिर से सुनामी स्लैम का यूज करेंगे। यहाँ पे मौत की सामना जो यहाँ पे करने का एओजी कनेक्ट होते हुए दिखेगा हमें। ये मेगा किल यहाँ पे जो लैंडस्टोन लेके जाएंगे, बहुत ही अच्छा खासा सस्टेन होगा अगेंस्ट उनका, डैमेज बहुत ही काफी अच्छा था, किलिंग्स भी यहाँ पे लेके जाएंगे। लेकिन डबल किल देखिए किस तरीके से गेम प्लान कराया गया है, ट्रिपल किल शायद यहाँ पे मैनियक जो है देखने को मिला। टीम जरूर कोशिश करेगा यहाँ पे मैनियक जो है उनको दिलवाया जाए, लेकिन इनके आगे जो है यूरेनस है, उनको जो मारना जो है काफी ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन की तरफ चला जाता है। तो मैनियक मिला नहीं, लेकिन लैंसलॉट का जो गेम प्ले था, स्पेशली लैंसलॉट को माना जाता है कि आप अगर यहाँ पे कोई स्क्विशी हीरो होता है उसको डैमेज देने में ज्यादा सक्षम होते हो, लेकिन लैंसलॉट जिस तरीके से टैंकी हीरो को मार करके मार रहे हैं, काबिल तारीफ था शिंदू दा। इसका लॉर्ड जो है आप हमारे स्पोर्ट्स को मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा स्पोर्ट्स जो है कमबैक कर रहे हैं, और गेम जो शायद BO5 जो है वो देखने की मौका मिल सकता है शिंदू दा। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से हम लोग देखेंगे टीम फाइट जो यामा स्पोर्ट्स से इतने अच्छे खासे से लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग प्ले खेला, वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा वेट किया, उनको अंदर बुलाए और उसके बाद कहा कि यहीं पे आपको वापस घर भेजेंगे। और इसी के साथ जो टीम फाइट यामा स्पोर्ट्स ढूंढ रहे थे उनको जरूर मिलेगा यहाँ पे, और इसी के बदौलत वो मिड लेन का टर्रेट भी निकालेंगे और लॉर्ड को भी। तो इसी के साथ बहुत ही अच्छा एडवांटेज फिर से देखिए, सब खाइल यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अकेले अंदर जा रहे हैं 4 मेंबर्स के बीच में, 5 जने अभी वहां पे, और उनका कोशिश जरूर रहेगा थोड़ा सा डैमेज दे, थोड़ा सा एचपी बार लो करे, ताकि वो फोर्स कर पाए उनके मेंबर को रिकॉल करने के लिए। और इसके साथ लॉर्ड मिड लेन का सेकंड टियर टर्रेट निकालेंगे जरूर यहाँ पे। और इसी के साथ बेस इनहिबिटर के सामने सब लोग जाके मार्च कर रहे हैं, शायद से ये बेस इनहिबिटर अभी भी खड़ा रहेगा क्योंकि मिनियंस नहीं है उनके पास, साइड से जो मिनियंस है वो पुश कर रहे हैं सेकंड टियर टर्रेट को। और इसी के साथ यामा उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा, और उनको कोई भी इनहिबिटर शायद से इस पुश के साथ ना मिले, पर वो जरूर कोशिश करे यहाँ पे एक और फाइट लेने का। क्या वो यहाँ पे मतलब मिस्टेक करेंगे, वो जरूर देखने वाली बात होगी यहाँ पे।
जी बिल्कुल, यहाँ पे एक गलती और जो गेम पलटी वो सिचुएशन आ चुका है यहाँ पे। अगर ये सेफ खेलते और इस तरीके के गेम प्ले दिखाते तो कहीं ना कहीं 5v5 वाला फाइनल मैच, एक्साइटिंग मैच जो यहाँ पर ब्रैकेट को हमें देखने को मौका मिलेगा। तो मैं कहना चाहूंगा यामा स्पोर्ट्स आप गलती बिल्कुल मत कीजिए, और जरूर इस मैच टूर्नामेंट के मैच पर यामा स्पोर्ट्स को बोलूंगा कि मुझे चॉकलेट जरूर गिफ्ट करेगी, क्योंकि शायद मैं उनके लिए लाखी आते ही जो गेम आया, गेम पलटा, वो हमें जो मौका मिल रहा है वो तो कहने काबिल तारीफ है ना शिंदे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आके सुना कि यामा स्पोर्ट्स 2 मैच ऑलरेडी हार चुका था, और मैंने कहा था कि गेम कभी भी पलट सकता है, जो अभी देखने की मौका मिल रहा है। तो इसी के साथ कहना चाहूंगा कि दोनों टीम बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली आईजीएन का नाम तो सबको पता है, यामा स्पोर्ट्स जिस तरीके से अभी ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से सबको उनका नाम पता है, सबका उनका गेम प्ले दिखा है, हम लोगों ने कास्टिंग किया साथ में, जो तारीफ किया उन लोगों का, वो हमें अभी रिपीट में देखने को मिल रहा है। देखिए ऊपर नीचे कभी भी किसी का हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई भी खराब गेम प्ले खेलेगा। जो अब स्किल वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लैंडस्लॉट से खेल रहे, जिस तरीके से टैंकिस आपका जो सस्टेन हीरोज को जो मार करके किल ले रहे हैं, उनका वो काबिले तारीफ था। तो अभी टीम फाइट जो थोड़ी देर में हमें देखने की मौका मिलेगा। लॉर्ड जो है 50 सेकंड में आएगा, इससे पहले छोटा मोटा टीम फाइट शायद हो, लेकिन लॉर्ड में जो फाइट होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार शिंगुदा। जी बिल्कुल, और सारे ही हीरोज के स्पेल अभी अवेलेबल है, तो अगर एक फाइट हुआ तो एकदम फुल फ्लेश फाइट होगा यहाँ पे, और ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो ये फाइट जीतेगा वो उनको जरूर ये लॉर्ड मिलेगा। 25 सेकंड्स अभी बाकी इस लॉर्ड के लिए, तो उनको थोड़ा मैक्रो जो गेम है यहाँ पे, जो मिनियन पुश होगा यहाँ पे मैप पे, उसका थोड़ा सा देख के ख्याल रखना पड़ेगा यामा स्पोर्ट्स को, क्योंकि उनके पास अभी भी लीड है, उनके पास गोल्ड है, अभी भी 5K का लीड है, तो उसी के चलते उनको डैमेज यहाँ पे जरूर ज्यादा मिलेगा। नेको क्वीन यहाँ पे नॉकअप जरूर करेंगे, पर प्यूरीफाई भी इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे यूरेनस की तरफ से। पर जो फाइट अभी एंगेज होने वाला है वो है टीम आईजीएन की तरफ से, वो अंदर जाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, पर बहुत ही जल्द फ्लिकर क्रैंक की तरफ से बचने के लिए यहाँ पे तो वापस से सब काइल बैकलाइन पे जाने की कोशिश करे। यहाँ पे हेरन द क्रिएटर के ऊपर बहुत सारा डैमेज, उनका एचपी बार 40% पे आ गया यहाँ पे, तो अल्टीमेट का भी इस्तेमाल करेंगे, पर जो स्पेल जो था वो बस एक ही जन से इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, वो रहेंगे क्रैंक, और इसी के साथ लॉर्ड भी यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, और यामा स्पोर्ट्स उनके ऊपर काम करना जरूर कोशिश करेंगे। लॉर्ड का एचपी लो बिल्कुल है, यहाँ पे जोन जरूर कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो बैक लाइन पे जाने का कोशिश, नॉकअप यहाँ पे, पर एओजी यहाँ पे बहुत ही पीछे, किसी पे कनेक्ट नहीं होगा, पर जाउजन यहाँ पे निकाला जाएंगे। फ्लिकर का इस्तेमाल हैरन द क्रिएटर पर, वो लास्ट हिट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इंपीरियल एक्स को केसएफ काइल को जरूर निकाला जाएगा, पर यहाँ पे क्रैंक जरूर कोशिश कर रहे बचने के लिए, पर फ्लिकर नहीं है उनके पास, रिवेरा पीछे है, शायद से अच्छा पोजीशन नहीं उनके पास, बहुत ज्यादा डैमेज ले रहे हैं, एओजी भी नहीं उनके पास, वो कोशिश अभी भी बरकरार कर रहे ताकि किसी ना किसी को ट्रेड कर पाए, पर ये कोशिश उनसे नाकाम होगी, क्योंकि विच का डैमेज उनको बिल्कुल मौत के घाट निकालेगी। और इसी के साथ लॉर्ड का जो एडवांटेज है वो शायद से इस बार आईजीएन की तरफ ऊपर पोजीशन देखें यहाँ पे नेको क्वीन का, वो जरूर यहाँ पे कुछ करने का, कुछ कमाल दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस्तेमाल जरूर हुआ था रफेस पर, जो वो रेट्रीब्यूशन था वो लॉर्ड को सिक्योर करेगा, पर इस बार जो चमत्कार को नमस्कार करने की कोशिश थी यहाँ पे नेको क्वीन की तरफ से, वो देखने को नहीं मिला जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोशिश अच्छा था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा लॉर्ड फाइट करने से पहले अगर एंगेज करके एक दो जो आईजीएन के हीरोज जो है यहाँ पे, जैसे एमएम हो गया या हाइपर हो गया, उनको मार करके अगर उनको जो मौत के सामना करा देते और टारगेट की तरफ वापस बचते, तो यामा स्पोर्ट्स के पास कभी ना कभी थोड़ा सा जो है शायद चांस ज्यादा हो जाता है परसेंटेज सर्टेन जो है लॉर्ड लेने का। तो अभी वो जो है जो हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे लॉर्ड जो डिफेंड कर लेंगे अच्छा खासा यहाँ पे आईजीएन, यामा स्पोर्ट्स, लेकिन जो प्रेशर बन रहा है धीरे धीरे, वो प्रेशर को गैप जो अभी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, जिस तरीके से फार्मिंग हो रहा है दोनों टीम, तो कहना कि लैंडस्लॉट को बहुत ही जल्दी जो है अपना स्किल का यूज, जो पहले हमें देखने को मिला था ट्रिपल किल मैनिक लेते थे बच गए, तो वो स्किल जो है हमें यहाँ पे दोनों मार्क करते हुए, स्पेशली 2 MM जो है उनको अगर निकालने में सक्षम हुए, तो गेम जो है काफी ना काफी हद तक यामा के हाथ में चला जाएगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पे मीडियो के साथ एक 1v1 का इस्तेमाल पड़ा, शायद वो दूसरी तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, और पूरा टीम यहाँ पे वापस आएगा उनको सपोर्ट करने के लिए, पर यहाँ पे अच्छा एस्केप, पर नहीं, सुनामी स्लैम वापस लेके जरूर आएंगे मीडियो को, और इंपीरियल एक्स 2 रहेंगे वहाँ पे डैमेज देने के लिए। तो एक और किल यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स की तरफ, तो अभी भी गेम उनके हाथों से निकला जरूर नहीं है यहाँ पे, पर जो नेक्स्ट लॉर्ड होगा शायद से वो बहुत कुछ बदल सकता है यहाँ पे, शायद से वो एक एनहांस लॉर्ड होकर एक और फाइट यहाँ पे हाइलोस के ऊपर, जाउजन का एचपी बहुत लो है, पर वो बच जरूर पाएंगे यहाँ पे। पर अभी जो अग्रेशन वापस से देखने को मिल रहा है यामा स्पोर्ट्स की तरफ, शायद अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, लैंसलॉट को जरूर कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे गेम अपने हाथों पे लेके बदलने की। जी बिल्कुल, यहाँ पे वो कोशिश तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा उनको, जो वरना अगर नहीं तो अगर प्रेशर में नहीं रखेंगे, तो आईजीएन को अगर प्रेशर में रखा नहीं गया, तो आईजीएन जिस तरीके से खुला घूमने वाले, उसमें काफी ज्यादा रिस्क जो है यामा स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा डिसीजन है कि यहाँ पे जो जिस तरीके से पोकर, मैं एक चीज के लिए सरप्राइज हुआ, आप यूरेना जैसा हीरो पे लैंडस्लॉट का डैमेज देखा आपने, 60-70% जो डैमेज जो है अकेला दे चुके थे उन्होंने,
थोड़ा बहुत हेल्थ बचा था, तब जब उनका बाकी टीम आया तो लैंसलॉट का फार्मिंग और डैमेज अगर सोचे कि यूरेनस जैसा हीरो को मेल्ट कर रहे हैं अपने स्किल के द्वारा। हम्म। जी बिल्कुल, अभी जो स्टैक अभी जो उनको जो यूरेनस को नहीं टारगेट करना। और जी बिल्कुल यहाँ पे यूरेनस बिल्कुल टारगेट नहीं देंगे, पर अगर वो लोग यूरेनस को निकलने में यहाँ पे सफल रहेंगे तो उनको जरूर बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा। वो फ्रंट लाइन जो है उनका वो अगर नहीं रहा तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा खासा उनको एडवांटेज मिलेगा। पर यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादातर टीम जो है यामा स्पोर्ट्स का वो सब टॉप लेन की तरफ है, तो जो बॉट लेन का जो मिनियन है वो यहाँ पे यूरेनस आराम से क्लियर करेंगे। जो प्रेशर होगा वो बॉट लेन की तरफ वो शायद से टी लॉर्ड फाइट पे एक दिक्कत दे सकती है यहाँ पे। पर अभी भी जो एक पिक ऑफ का जो एडवांटेज है वो अभी भी यामा स्पोर्ट्स की तरफ है। यहाँ पे वहाँ पे विजन नहीं उनके पास, वो अंदर जाएंगे प्यूरीफाई का इस्तेमाल, पर रफ वेव्स के बाद वो किल नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा कोशिश नेको क्वीन का, पर थोड़ा सा नाकाम। पर इसी के चलते जो प्यूरीफाई था वो बीट हो जाएगा यहाँ पे विच की तरफ से। तो अगर नेक्स्ट टीम फाइट पे अगर क्रैंक उनको पकड़ पाए तो अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, मैं कहने वाला था। पर यहाँ पे क्रैंक ने पकड़ा है यहाँ पे एरन द क्रिएटर को, और उनको निकाला जाएगा इंपीरियल एक्स का। यहाँ पे विंड ऑफ नेचर का इस्तेमाल, फ्लिकर से वो बच जाएंगे। यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश है यहाँ पे, पर मीरियो उनको चेस करेंगे और निकाला जाएगा उनको भी। पर बैकलाइन की तरफ अगर देखेंगे यहाँ पे रिवेरा अभी भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे उनको जोन आउट करने का, पर डैमेज यहाँ पे वापस एसएफ काइल को मिलते हुए। और विच का एचपी बहुत लो है यहाँ पे, वो भागने में सक्षम रहेंगे, पर फिर से यहाँ पे मीरियो को स्पॉट किया जाएगा। और ये है एक यूरेनस का सस्टेन जो हमें देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल अच्छा खासा डैमेज को सोक कर रहे, जो उनको करना चाहिए। यहाँ पे उनको रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि इंपीरियल एक्स2 को निकाला जा चुका है यहाँ पे। तो विदाउट एमएम जो लेट गेम पे जो डैमेज होता है वो शायद से इनफ नहीं होगा, तो उनको अपने एमएम के लिए यहाँ पे इंतजार जरूर करना पड़ेगा। पर क्या हाइजेन रुकेगी, क्योंकि उनको चाहिए लॉर्ड यहाँ पे। जय भैया। और इसी के साथ अगर देखेंगे तो एक और फाइट यहाँ पे शायद से यहाँ पे फिर से आईजीएन कोशिश करे ताकि एक उनको एक शटडाउन मिले यहाँ पे, बट एओजी का इस्तेमाल करने से पहले विच उनको निकाल लेंगे। और इसके साथ बैकलाइन पे देखिए तो नेको क्वीन कोशिश जरूर करे एक शटडाउन के लिए, पर उनको मिलेगा नहीं यहाँ पे। पर जो डैमेज होने वाला है लैंसलॉट और ये बीएट्रिक्स का, उससे एरन द क्रिएटर बिल्कुल मौत के घाट पे उतारे जाएंगे। और इसके साथ जो लॉर्ड एडवांटेज है दोनों ही टीम की तरफ अभी भी 4v4 मेंबर्स है, पर लैंसलॉट का एचपी बहुत लो है, उनका इमॉर्टैलिटी यहाँ पे निकाला जाएगा। पंक्चर यहाँ पे उनका अंदर जाने का कोशिश जरूर था, पर उसके साथ वो नहीं कर पाएंगे। फैंटम एग्जीक्यूशन उन्होंने इस्तेमाल जरूर किया था रिस्पेक्ट की तरफ, पर वो उन्होंने जूक कर दिया उसको। और इसके साथ विदाउट द जंगलर शायद से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और इसके साथ अच्छा खासा जोनिंग और शायद से ये लॉर्ड फ्री में मिल जाए, पर देखते हैं यहाँ पे विच इस बार फिर से लॉर्ड को सिक्योर करेंगे। पर शायद से एक और फाइट यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स की तरफ आता हुआ आईजीन की तरफ, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मिरियो बहुत अच्छा एचपी लो कर रहे हैं। मिरियो यहाँ पे क्रैंक का सुनामी स्लैम लेंगे, पर वो सब कोशिश करेगी उनका टीम यहाँ पे बच जाए। पर यहाँ पे एक प्रीमैच्योर या फिर ज्यादा अर्ली एओजी का इस्तेमाल, पर क्यों, सवाल वो रहेगा। यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि अगर अंदर आके फंसी तो कोई ना कोई घुसी, वो चांसेस लेने की कोशिश करता है। चलो कोई बात नहीं, एओजी जो अभी लॉर्ड आता है जो फिर से आ जाएगा, उस बात का टेंशन नहीं। लेकिन अभी टीम फाइट में देखिए किस तरीके से एडवांटेज किया लैंसलॉट जो है, उन्होंने पूरा कोशिश किया कि आप मरते वक्त तक कि अगर मार्क करके मार ले, लेकिन डैमेज सस्टेन नहीं कर पाए। इसके साथ लॉर्ड जो है अभी बेस की तरफ मार्च करता हुआ जाएगा। अभी भी जो केलिया जो है क्रैंक, अभी भी क्रैंक जो है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो अभी भी बेस की तरफ रिस्पॉन्ड में टाइम लगेगा। इसका देखिए यहाँ पे मॉडर्न स्लॉट को मौत का सामना करना पड़ सकता है जी, बिल्कुल किलिंग्स भी लेके जाएंगे वायरस। उन्होंने डैमेज जो है मार्क तो बिल्कुल ही मिस नहीं किया, एओजी का यूज किया जाएगा यहाँ पे। गेम जो शायद फिर से आईजीएन शायद यहाँ पे निकाल के ले जाने सक्षम होगा, क्योंकि अभी कोई बचा ही नहीं, सिर्फ एक हीरो बचा है। बैटरी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, गाटो को एओजी के साथ पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैच गया तो यहाँ पे इस बार भी शायद अगर मिनियंस ने सपोर्ट दे दिया तो गेम जो है आईजीएन लेके जाएंगे और मैच को भी आईजीएन लेके जाएंगे। और यामा स्पोर्ट्स जो है फिर से लोअर ब्रैकेट में वापस आएंगे। काफी काबिल तारीफ गेम प्ले था, लेकिन बस थोड़ा सा गलती और ये गेम जो है पूरा पलट गई। जी बिल्कुल, नेको क्वीन बहुत ही अच्छा उन्होंने कोशिश किया था विच को मार्क करने की, और वो ऑलमोस्ट टेबल थे वहां पे, ऑलमोस्ट उन्होंने वो सफल थे वहां पे। पर थोड़ा सा वो प्यूरीफाई के चक्कर पे वो बिल्कुल बच जाते हैं हमेशा। मतलब वो एकदम एक मछली जैसी, आप पकड़ जरूर सकते हो पर उसको हाथ में रख नहीं सकते। वही बात देखने को मिली यहाँ पे। विच बहुत ही अच्छा खासा उनका जो गेम प्ले था वहां से उन्होंने गेम को बहुत ही ज्यादा होल्ड करके रखा था। और इसके साथ जो डबल एमएम जो डैमेज होता है लेट गेम पे वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज दे रहा था। पर एसएफ काइल इवन इंपीरियल एक्स उन्होंने बहुत ही अच्छा कोशिश किया था, पर जो यूरेनस का सस्टेन जो आ रहा था लेट गेम पे, जो हम लोगों ने अर्ली गेम पे बात कहा था कि बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रहे हैं वो,
पर वो लेट गेम पे जो सस्टेन चाहिए था उनसे, वो ज़रूर देखने को मिला और इसी के चलते आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डैमेज सोक किया वहाँ पे और इवन ऐसा काइल जो लैंसलॉट का जो लेट गेम होता है, वो ज़रूर थोड़ा-सा फॉल ऑफ होता है वहाँ पे, थोड़ा-सा लेट गेम पे उनका डैमेज इनफ नहीं होता है और 3 टैंक की फ्रंट लाइनर के अगेंस्ट पे एक लैंसलॉट को थोड़ा-सा मुश्किल थोड़ा नहीं, बहुत-सा मुश्किल ज़रूर होता है। तो जैसा कि आपने कहा था यहाँ पे आइजिन यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स को लोअर ब्रैकेट के दर्शन ज़रूर करवाएँगे पर वो ज़रूर आउट नहीं होंगे पर आइजिन अपना जो पोज़ीशन है, वो ग्रैंड फाइनल्स पे ज़रूर एकदम फिक्स करके रहेंगे यहाँ पे भैया। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम उम्मीद तो था बहुत यामा स्पोर्ट्स से। यामा स्पोर्ट्स ने बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले दिखाया है यहाँ पे, लेकिन वही मिड गेम से लेट गेम तक जो डैमेज को उनको बर्स्ट डैमेज जो उनके पास सिर्फ लैंसलॉट का प्रॉपर था और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बियाट्रिक्स का डैमेज जरूर था, लेकिन बियाट्रिक्स कहाँ तक डैमेज देगा, कब तक डैमेज देगा, कायदा किसको मार करेंगे, प्यूरीफाई तो उनके पास, उसकी वजह से कायदा जो है मछली खुद खाया था, मछली होते हुए यहाँ पे बियर जो है बाकी जो है यहाँ पे आईजीएन जो है मछली की तरफ फिसल के भाग रहे थे प्यूरीफाई की तरफ से। कोशिश अच्छा था, ऐसा नहीं कि यामा स्पोर्ट्स कमबैक नहीं कर सकता, जिस तरीके से उन्होंने आईजीएन को टक्कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था, वो गेम देखते हुए लग रहा है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस जो हमें आगे आने को जो है देखने को मिलेगा शिलूदा। जी, बिल्कुल और ये दौर जो है, वो खत्म नहीं होता है क्योंकि आज ज़रूर एक अपर ब्रैकेट फाइनल खत्म हुआ पर जो लोअर ब्रैकेट फाइनल होगा वो भी अभी बाकी है कि उसी के बाद हमें पता चलेगा कि आईजीएन को टक्कर देने वाला कौन होगा मेटा निंजा लॉन सीरीज के ग्रैंड फाइनल्स पे। तो गाइस बिल्कुल ना भूलिए, डेट लॉक कर लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट पे देखिए कब होने वाला है ये नेक्स्ट गेम, क्योंकि उसी के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा कौन रहेगा वो ग्रैंड फाइनल लिस्ट और चैंपियन भी कौन बनेगा। क्या आईजीएन अपना नाम यहाँ पे एकदम मतलब अपने हाथों से लिख सकते हैं एकदम गोल्डन लाइक क्या बोलते हैं इसको विजय भैया, गोल्डन गोल्डन लेटर से कि गोल्डन ये गोल्डन गोल्डन वर्ड्स है। जी गोल्डन वर्ल्ड, बिल्कुल, ऐसा ही जी कुछ है। बिल्कुल, जी बिल्कुल अपने इतिहास पे सोने गोल्डन की अक्षर अक्षरों से, से अपने सोने नाम, की अक्षर मुझे से। याद आया, मुझे याद आया, मुझे याद आया गोल्डन हाँ, आई मीन ये सुनहरी देखिए मेरा अक्षरों हिंदी उतना अच्छा नहीं, मैं कोशिश अक्षरों में, कर रहा हूँ यहाँ पे आप लेके सुनहरी जाइए। अक्षरों में, सुनहरी अक्षरों जी में बिल्कुल, लिख, इतिहास के पन्ने पे लिख पाएंगे कि नहीं। जी, बिल्कुल। जैसे जय भाई ने कहा, देखिए मैं बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ गाइस। तो एनीवे विद दैट अभी हमें एक आज के लिए यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा ये स्ट्रीम, ये गेम प्ले पर। आई होप यू गाइस वर एंटरटेन्ड, क्योंकि अगर आप एंटरटेन नहीं हुए तो कल वापस आइए, बिल्कुल एंटरटेन रहेंगे आप। तो इसी के साथ गाइस गुड नाइट, शब्बा खैर और सभी के लिए हमें आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और हम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ एक और वक़्त और एक और टीम के साथ।